Yes, welcome to the second session of CRPC Rapid Revision Round. And in the today's session, we will be discussing the next area, that is onward section number 100. What is the relevant area of discussion that we will be taking up in this particular class today? Uh, okay, so let us begin with the session. I hope my voice today is very clear to everyone. Yes. With respect to the Code of Criminal Procedure, look, till section number 100, whatever the sections we have done in the last session on the Law Sikho Judiciary Prep channel, that all those sections are very, very important. But yes, whatever we have to discuss today, that will be relating more to the exam oriented approach, and that will be discussing now. So let us begin with the session, and section number 106 onwards we will be taking up today. You people just have your barracks with you, whatever the important pointers or important cases I will be mentioning to you people, please jot it down on the concerned bare act itself. So let us begin with the session, and the first area of discussion will be chapter number 8 of the CRPC, which is starting from section number 106 onwards. Look, onward section 106 till section number 110, all the sections are very important. All the sections are very important, and let us see what are the area of concern from where the questions can be there. कहाँ से सवाल आ सकता है? Let us have the discussion on that. So, as it is section number 106, it is talking about like whenever a person is convicted by a particular court, and from that particular person, a security is demanded for keeping peace on conviction. So, in that particular case, section number 106 is the right provision whereby the Court of Sessions and the Judicial Magistrate of first class will be having the competency to get the person order that yes, you have to deposit security in the court of law, so that we will be ensured that you will be keeping peace during your conviction, and this time period for the bond will be to the maximum of 3 years. It will not go beyond 3 years. Now it states that under which kind of sections this particular bond is to be executed by the concerned accused, which offense he has committed. So as it is mentioned that offenses referred in subsection 1 are any offenses punishable under chapter number 8 of the IPC other than the offenses of 153 capital A, 153 capital B and 154. So if the offenses are there under chapter number 8, then only this bond will be executed under section number 106 of the CRPC. But if in case the conviction of a person is set aside on appeal or otherwise, then the bond which is executed by him, the bond will become void. So from here also the multiple choice question usually comes. Thereafter, section 107, it appears that whenever you have to take a security from a person for keeping peace, or there is a suspicion that the person is going to disturb the public tranquility, then in such cases executive magistrate has the competency under section 107 of the CRPC to get the bond executed for keeping peace and good behavior, for keeping peace for a particular period, and the period will not be exceeding more than 1 year. Thereafter, section number 108 is there, that is for security for good behavior and the persons disseminating seditious matters. So in this particular case also, who is having the competency to go for the execution of the bond, that is the executive magistrate has that competency. What kind of sections will be there? So section 124 capital A, 153 capital A, 153 capital B and 295 capital A of the Indian Penal Code. If any offense is committed under such sections, seditious material is published, and the magistrate is of the view that the security is to be demanded from such person for maintaining the good behavior, then under section 108 they can go for it. The maximum time period for this particular bond will be
not exceeding 1 year. So the maximum period is 1 year only. Thereafter, section number 109 is important. That is security for good behavior from the suspected persons. In this case, also executive magistrate will be having the competency to execute the bond, and the time period for this bond will be to the maximum of 1 year. It will not go beyond 1 year. So, what kind of question comes in the exam? That which kind of bond is to be executed, which section is there, like marginal headings you people have to take care, and which magistrate is having the competency, so executive magistrate or court of session or JM1C as it is referred in 106, and what is the maximum time period for executing the bond, so that is 1 year or 3 years. So ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है. Thereafter, section number 110, it is talking about that security for good behavior from the habitual offenders. So if a person appears to be a habitual offender and we are of the view that this from this person a security is to be taken up, then executive magistrate under section 110 can go for that. Like what kind of person that is, why we are saying that person is a habitual offender. So it is mentioned in 110 itself that the person is in a habit of robber, a person is in a habit of housebreaker, thief, forger, etc., or he receives stolen property habitually, or habitually he conceals or disposes any stolen property, he habitually go for the offenses of kidnapping, abduction, extortion, etc. So if such kind of persons who are the habitual offenders, we can say, and from that person the security is to be taken up, executive magistrate has the competency to go for that, and the maximum time period for this particular bond will be not exceeding 3 years. So the maximum period is only 3 years period. Now what you people have to take care when you are going for this particular section, like in this section after clause number F, there are certain things mentioned, like habitually if a person commits any of the offenses which is under a drugs and cosmetics act, foreign exchange regulation act, employee provident fund, prevention of food adulteration act, essential commodities, untouchability, customs, and foreigners act. So from these areas they usually ask the multiple choice question. You people have to take care of this, that from this area what kind of acts are mentioned, you must have to take care of it. Now after this you people have to just go through from 106 till 1010, and after this only the implemented area, that how these things will be done by the executive magistrate, that is only written. So for that particular aspect you people just give a bare reading. Whenever you will be taking up the bare acts, just have a bare reading on section number 117 only for your journal reference, though it is not that much important with respect to the prelims exam. इसके बाद apart from this, the next area of discussion which is important for you people with respect to the Delhi judiciary is section 125 of the CRPC. Section 125 is very important. Many times from section 125 different questions were asked. So there are certain dimensions which you people have to go through. Now, what is being mentioned in section 125 for which you have to take care? It is stating that if any person is having sufficient means and he neglects or refuses to maintain who? That is his wife. Whether the wife is a continuing wife or she is a divorced wife, doesn't matter. Next one is if the person is not maintaining his or his legitimate or illegitimate minor child, whether married or not, unable to maintain itself. So if a child is legitimate or illegitimate but the child is minor, whether that child is married or not, doesn't matter. If the child is unable to maintain itself, you have to maintain him. Next is if there is a legitimate or illegitimate child, not being a married daughter who has attained majority, but because of the mental or physical abnormality or injury, the person is unable to maintain itself, then in that case also under section 125 the maintenance can be claimed by such persons. Next one is if the person is not maintaining his father or mother, then in that case also if the father or mother are unable to maintain himself or herself, then also they can go for the proceedings under section 125 of the CRPC and they can claim maintenance. Now, what kind of question comes that under which code the proceedings of 125 will be taken up? So it is magistrate of first class. Another point which you people have to understand, that if a person
is having a minor female child and that child is married, and her husband is not able to maintain that minor female child, then in that case also the father is under a duty to maintain that minor female child. It is referred in the proviso that the magistrate may order that the father of a minor female child, until she attains her majority, if the magistrate is satisfied that the husband of such minor child, if married, is not possessed with the sufficient means. So that again, in that case also, if the person with whom the minor female child is married, if that person is not able to maintain her, then the father will be under the responsibility to go for the maintenance. Next, the definition of wife is important. And given in explanation, it is saying that wife includes woman who has been divorced or has obtained divorce from her husband and has not remarried. So if the woman is remarried, the wife is remarried after divorce, then that particular wife is not entitled to get maintenance under section 125 of the CRPC. Thereafter, there are certain things which are important with respect to your exam. It is stating that if a person does not pays the maintenance amount which is being given ordered by the court, or he makes any default in that, then for every default he can be imprisoned, which may extend to the maximum of 1 month, which may be to the maximum of 1 month for each default. But how the recovery is to be done, like for example, the court has ordered husband to pay maintenance to the wife, husband does not pay a maintenance for a particular month, then in that case wife may initiate a proceeding for this particular default, and husband can be imprisoned because of this particular default, and the maximum period of imprisonment for one default will be 1 month. And the process of levying the fine or levying the maintenance is given in section number 421 of the CRPC. So just mention in the bare act itself that how the recovery will be done. So it is mentioned in section 421 of the CRPC itself. Now after that, another important question, that if the such proceedings are to be taken up and warrants are to be issued for the levying of the fine, within how much time the proceedings to be taken up. So it is mentioned that within 1 year from the date on which it becomes due. The moment the amount becomes due, जिस दिन पैसा ड्यू हुआ उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर आपको proceedings initiate करवानी पड़ेंगी. Now second situation is, in what scenario the wife is not entitled to get the maintenance. So there are certain cases in which the wife is not entitled to get the maintenance. That is that is where the wife is living in adultery, or she refuses to live with her husband without any sufficient reason, or she is living separately by the mutual consent. If these three things are there, if she is living in adultery, or she refuses to live with her husband, or she is living separately by mutual consent, then in such cases also wife is not entitled to get maintenance under section number 125 of the CRPC. Second point, that if the wife is living in adultery, etc., and the maintenance was allotted to her, in that case also the magistrate has the competency to cancel such order. In section 125 clause number 5, it is specifying that magistrate can cancel such order. So coming to the cases on this particular point, there are certain cases which are relevant for you people. One is Chanmunia versus Virinder Kumar Singh Kushwaha. This point is on the living relationships, that if the wife is in a living relationship, if two persons are in a living relationship with each other, they will be considered to be the husband and wife, and in that case also section 125 will be applicable. The next case that is important with respect to section 125, that is Savita Ben Sombai Bhatia versus state of Gujarat, that if one person got married and thereafter he gets into another marriage, so do the wife of a second marriage is entitled to the maintenance. Wife of second marriage is entitled to the maintenance under section 125 of the CRPC. The answer given by the court is that if the second wife is already aware about the previous marriage of her husband,
and still she get into the second marriage, she is not entitled under 125, because under 125 only the valid marriages are being considered, void and voidable marriages are not considered. But in 2013, another case was decided by the Honorable Supreme Court, that is Badshah versus Badshah, whereby a person was married with a woman and thereafter he got married with another woman, and the second wife was not aware about the previous marriage. So in that case, husband has cheated with the second wife, and in that case the court stated that because there is no fault of w1, though the marriage is void in nature, but yes, she is entitled to section 125 maintenance as per the crpc. So this is a very important case law, that is Savita Ben Zumbai Bhatia versus state of Gujarat, as well as Badshah versus Badshah 2013 Supreme Court. Now these are the basic things which you people have to understand. Recently another case with respect to section 125 is passed, that is Rakesh Malhotra versus Krishan Malhotra 2020 Supreme Court, that is also on the same parameters in which the previous judgments are being decided. Now certain questions comes that if the proceedings under 125 are to be taken up, what kind of process it will be taken. So as the process of summons case is there in the CRPC, that process will be followed. Number two, the if the court has passed ex parte order with respect to the maintenance, that ex parte order can be set aside within 3 months. After that, section number 127 is there, which is stating that okay, in which cases the maintenance order which is being given by the court, it can be cancelled. So there are 3 provisions under which the cancellation can be done. That is section 125 clause 5. That is if the woman is living in adultery, or she is unchaste, or living with some other person, extramarital affair is there, then in that case magistrate can cancel such order. And in section 127 clause number 2 and clause number 3 also, there are certain possibilities where the alterations or modifications or cancellation of the maintenance order can be done by the magistrate if there is change in the circumstances, like a person got remarried. That is the point where the way the maintenance is to be modified or it should be varied. So usually the MCQ comes that under which provisions the maintenance order can be cancelled. So these are the 3 provisions which you people have to take care: 125 clause number 5, 127 clause number 2, as well as 127 clause number 3. Now there is another situation, like if the woman want to surrender her right to maintenance, too she can go for that. The answer is very yes, woman can surrender her right to maintenance. If she is saying that okay, I don't need maintenance, she can go for that. Subsequently, as you people can see in the DJs, in the previous year papers also, the questions from 125 is there, like when the alteration can be there, as I stated you people. So 127 is important for you guys. 127, that when the alteration can be there, when the modifications in the maintenance can be there. And another thing is, if an order is being passed and the person is not giving the maintenance, etc., then what should be done by the court. So all those things are very very important. So 125 को बहुत अच्छे से 126 and 127 इन तीनों को ही आपको अच्छे से समझ के जाना है, because if you are not going through with these provisions, possibilities are very strong that from such provisions the questions will be there. And with respect to this Badshah versus Badshah's case and Savita Ben Sumbai Bhatia's case, both of these cases are the settled precedents being given by the Honorable Supreme Court, and it is your moral duty as well as legal duty to understand these basic things, that what is being mentioned in these cases. Now after that, there is section number 128, that is only talking about that how the maintenance order will be enforced by the court. So the enforcement will be done like if the person has not paid the money, the concerned wife will go to the magistrate's court. She will be filing an application for the enforcement of the order of maintenance, and then the things will be taken up by the court as per section number 128 of the CRPC. And in such cases, as I stated you people, like the moment the maintenance order is to be executed or enforced, section 421 proceedings are to be taken up. 421 generally provides that how the fine is to be levied over a particular person. The same concept applies with respect to the maintenance also. After that, there is a next provision, that is 129 onwards. It is not that much relevant, but okay, you must go through with 3 sections, that is 129, 130 and 131. ये 3 provisions आप एक बार जरूर नजर मार के रखेंगे. Reason being, like whenever the public order is to be maintained or tranquility is to be maintained,
and there are certain unlawful assemblies which are assembled. So how to disperse that unlawful assembly? So first mechanism is to go for the application of a civil force, and who can pass the order, that is the executive magistrate or the officer in charge of the police station can go for it. But if the unlawful assembly cannot be dispersed because of the civil force, then definitely you have to proceed one step ahead, and executive magistrate of the highest rank will have the power to order the armed forces to disperse such assembly, that is unlawful assembly. And thereafter, it is also written in this particular section itself that if the senior most executive magistrate is not available, that who can pass such orders. So any member of the armed forces who is a commissioned member of the armed forces can pass such orders. So these are the basic things which are mentioned in 129, 130 and 131, that how to disperse the unlawful assemblies. So not that much important, but okay, you have to understand that what kind of things can be there in the multiple choice question. Okay, iske baad section number 133 is there, that is talking about that conditional order for the removal of the nuisance. Question usually comes that who can pass the conditional order. It is the district magistrate, subdivisional magistrate, as well as the other executive magistrates who has the competency to pass conditional orders. Next one is that why the conditional order is required to be passed. So for that, there are certain possibilities where there is an unlawful obstruction or nuisance is there in a public place or anywhere between a river or channel. There, for the removal of such unlawful obstruction, conditional order can be passed by the authority. If any trade or occupation is there which is injurious to the health or physical comfort of the community, in that case also conditional order can be passed for the removal of, or for restricting such and prohibiting such trade and occupations. Thereafter, for the construction of any building, if it is there which is likely to configuration or explosion, then you can stop such construction, etc. If any building, tent, vessel is there or tree is there, because of which there can be an injury to a person living or carrying on such business in the neighborhood, etc. So for the removal of such tree, building, tent, structure, etc., also you can go for the removals. Similarly, whenever, for example, any open tank is there, there is a well which is required to be covered, and the magistrates are having the competency to pass such orders. If any dangerous animal is there who is required to be destroyed, confined, then such orders can be passed. All these orders are to be called as the conditional orders, which are being passed by the magistrates as specified in section number 133. What kind of question comes from this particular section? That if any order is passed by the magistrate under 133, do the civil court can raise any question on that? The answer is no. No order duly made by the magistrate under this section shall be called in question in any civil court. That is very, very important question. Very, very important. Next one is, after this, you people just come to section number 142. It usually comes like under which section the injunction pending inquiry is there. So whenever under section 133 the magistrate is required, or he's of the view that okay, conditional order is required to be passed, but some inquiry is to be conducted. So till the inquiry is pending, injunction will be passed by the magistrate himself. So this is important, that under which section injunction pending inquiry is there. It is section number 142. In Himachal Judiciary 2019 exam, this question was there in the prelims. So again, only the marginal heading was there, so just take care of that. Now the next thing is under section 144. Under section 144, there are certain cases which are appearing to be of urgent nature, that where the nuisance or apprehended danger is there. As you people know that okay, section 144 usually applies if any disturbance is there. Now what actually the 144 is? So 144 is usually passed whenever there are certain persons who can create danger to the human life, health, safety, or disturbance to the public tranquility, rights, or affairs. If such kind of possibilities are there, the district magistrate, subdivisional magistrate, or the other executive magistrate, specially empowered by the state government, they can order section 144 to be applicable. Question comes that why section 144 is required? Because it is a matter of emergency, and that is why it is required to be passed, so that the unlawful assembly could be dispersed.
But the another question which comes is, what is the maximum duration of the order of 144? That is, no order under this section shall remain in force for the period of 2 months. In your Bare Act, just mark it down. 2 months is the maximum time period which is being there for the order of section 144 of the CRPC. Thereafter, there is section 145, that is basically whenever the private kind of a dispute is there between certain parties related to land or water, etc., because of which the breach of peace can be there. कुछ एक लोगों के बीच में अगर विवाद है जमीन को लेके या पानी को लेके, तो if there is a dispute and there is a possibility that okay the breach of peace can be there, the executive magistrate has the power to proceed in such kind of a case, and he will be taking up inquiry. Whatever the persons are stating to the magistrate, he will be recording that, and whatever the dispute is settled, the orders will be passed by the concerned executive magistrates under 145 of the CRPC itself. So it is a dispute related to an immovable property which is there, and under section 145, under section 145, one thing is important for you, that whenever such kind of disputes are there, the question comes that who is having the authority to pass the orders. So executive magistrate, like for example tehsildar is there, or subdivisional magistrate is there, who is empowered by the government, that person will be proceeding with regard to such disputes. So 145 only the marginal heading is relevant, nothing beyond that. And if any person is going to violate and breach the peace, etc., then under section 107 you can go for the execution of the bonds also. Thereafter, section number, you people just now come to section number 149, that is chapter number 11, and from here the maximum area of your multiple choice questions is there, because chapter number 11 and chapter number 12 are very, very important. What is there in chapter number 11? There is the preventive actions of the police. Chapter 11 talks about the preventive actions of the police. Now, what is the preventive action? That is important. So, preventive action usually means that whenever the police officer is of the view that there is a suspicion that someone can commit a cognizable offense. There is no such cognizable offense yet committed, but yes, there is a very strong possibility that it might be getting committed, or someone gives information with respect to such commission of the cognizable offenses to the police officer. Under section 151, the police officer is having the competency to arrest such person so that the commission of the cognizable offense can be prevented. So the basic thing that you have to understand is that here there is no such offense which is yet committed, but only on the basis of the anticipations, you are arresting someone so that the commission of a cognizable offense could be prevented. And if any arrest is done without warrant, the concerned person, if he is not released on bail, then that person cannot be detained in custody for more than 24 hours. And if he is required to be detained beyond 24 hours, then it is required to get the permission from the magistrate. Under which section? My question to you people, first question for today. My first question is, under which provision you will be producing the person before the magistrate? Under which provision you will be producing the person before magistrate? Just give your answer in the comment box. Under which provision you will be producing the person before the judicial magistrate? Who will be giving me the answer? Let me see. Sakshi is saying that we will be able to complete CRPC today. We'll try our best, because it is a rapid revision. It is not the conceptual things, because conceptual things we used to take up in the classes only. It is only the Bare Act in one go how you can take it up. So I got the answer from George. George is also there. 167 of the CRPC, very right answer. 167 provides that okay, whenever the person is arrested beyond 24 hours, he cannot be detained, and for the further detention, if required, you have to produce that person before the judicial magistrate under 167 of the CRPC. So now coming to the next area of discussion, that is section number 154 onwards, the main important area of CRPC, that is chapter number 12. So whenever the FIR is to be lodged,
and it is a cognizable offense. With respect to the FIR, there are certain basic requirements which people have to see. Okay, that every information with respect to the cognizable offense, if given to the police officer orally, it should be reduced into writing and it should be read over to the informant, and then the informant will be signing over that particular statement, and it will be a part of the first information report. Another proviso which is being attached to this is that if any offense is there against a woman, the FIR will also be lodged by the woman police officer or any woman officer. Any woman officer. If the woman police officer is not available, that any other woman officer can be there. She can record such statement. Now, there is one point that if the police officer refuses to lodge an FIR, then what? Then what is the next step available to the informant? So the next step is section 154 subsection 3. That is, he can forward that particular information to the superintendent of police in writing and by post. And if the superintendent of police want to get the FIR to be lodged, yesterday I had told you people that under which section the superior officers are having the same powers as given to the officer in charge of the police station. Yes, everyone, which provision is there in CRPC which gives the superior police officers all the powers which are available to officer in charge of the police station? Yes, quick, give me the answer to this question. Under which provision? Section number 36. Very good. Section number 36 provides that powers of the superior police officer. Now there are certain series of judgments which are there with respect to the point that if FIR is there, what kind of relevant cases can be asked from you in the exams? So the basic and very very important judgment, that is Lalita Kumari versus Government of UP 2013, 5 judges bench, and the judgment was delivered by Justice P. Sadashivam. And in this particular case law, what is the key point stated by the Honorable Supreme Court? What is the key point? The key point is, in every cognizable offense, if it is very clear that the offense is cognizable in nature, if the offense is cognizable in nature, the police officers are duty bound to lodge the FIR. They cannot go for the preliminary investigations. They cannot go for the preliminary investigations. But yes, there are certain cases in which the preliminary investigation can also be conducted. Like commercial disputes are there, matrimonial disputes are there. In such cases, you can go for the preliminary investigation before lodging the FIR. But as a journal reference, if we say, if the police officer is very clear that the offense is cognizable in nature, he has to record the FIR. And in Delhi Judicial Services in 2019, there was a question that if any preliminary investigation is to be done, like to find out that whether the offense is cognizable or the offense is non-cognizable, the police officers are not very clear on this. They want to get some preliminary investigation to be conducted. The maximum time period which is there is 7 days. 7 days. So earlier, let me tell you people that earlier it was 7 days period which was being granted by the Honorable Supreme Court, that the police has to conduct preliminary investigation within 7 days. But thereafter, an application was filed by the Delhi police, and thereby this time period was extended from 7 days to 15 days period. तो अगर कभी सवाल आ जाए, तो जैसे लास्ट 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 7 days का टाइम पीरियड मेंशन था, तो दैट शुड बी द आंसर यू हैव टू मार्क. बट that judgment was there, but after that, after the passing of the judgment, an application was being filed by the Delhi police in the Honorable Supreme Court, and thereby the time was extended from 7 days to 15 days period. Another case on the same point, that is Bhajanlal versus State of Haryana. Again, very very important judgment with respect to the first information report. Recently, there is a case, that is Sheikh Ansar Ahmad versus Sheikh Ansar Ahmad Muhammad Hussain versus State of Maharashtra 2021. In this case, the Honorable Supreme Court has stated that preliminary inquiry can be conducted where there is a doubt with respect to the offense. Preliminary inquiries can be conducted if there is a doubt with respect to the commission of the offense, whether the offense is cognizable or it is non-cognizable. If it is not very clear, then the authorities can go for preliminary investigation. Another important judgment, that is Madhusudan Singh versus State of Bihar.
Madhusudan Singh versus State of Bihar is on the point that FIR is having some evidentiary value. It can be used for corroborations and contradictions. It can be used for corroborations and contradictions. So this is basically most of the time the question comes that what is the evidentiary value of the FIR in the written paper, means paper. This question comes. So Madhusudan Singh can be referred over there also. In the prelims also, these judgments are important, so you just have to mention it. Pandurang Chandrakant Mahatre versus State of Maharashtra 2009, again on the evidentiary value of the FIR. Evidentiary value of the FIR. Thereafter, there is a case that is Nandlal and others versus State of Chhattisgarh 2023 Supreme Court. I hope you people have heard this particular judgment. This case was on the point if there is a delay in lodging of the FIR. If there is a delay in lodging of the FIR, what will be the impact of that? So usually when the offense is against a woman, then delay in lodging of the FIR is self-explained, but in the other cases it will create a suspicion on the conduct of the officer in charge or the investigating authorities. Another case that we are having, that is Youth Bar Association versus Union of India. This case is on the point that whenever the FIRs are recorded, the police has to record and upload these FIRs on the online portals. So this is not the question directly with respect to the Code of Criminal Procedure, but yes, it is a question of general awareness that under which case the Honorable Supreme Court has stated that FIR should be uploaded on the police website. So it is Youth Bar Association versus Union of India. Thereafter, another case, that is State of Punjab versus Gurmeet Singh, a very, very important landmark judgment, because of which several amendments are there in the CRPC. And in the State of Punjab versus Gurmeet Singh also, the point was that FIR is to be lodged by the woman police officer, possibly if she is available, and if she is not, then woman officer will record it. If there is a delay in lodging of the FIR, it is a self-explained delay, so it is not required to give any explanation with respect to that, because offense is against a woman. After this, Jeffel Biswas case is also related to the same kind of things. Okay, same kind of things are there. Like if there is a delay in forwarding the copy of the FIR to the magistrate, what will be the impact of that? This Jeffel Biswas case is on the point of 157 CRPC. I will be taking up this provision after this. So the next section is section number 155, that is related to the non-cognizable cases. Like whenever the non-cognizable offense is being committed, then a non-cognizable report is to be lodged by the authorities. Non-cognizable report is to be lodged. Now the question comes that do in the non-cognizable cases the police authority can investigate without the permission of the magistrate? The answer is no. You cannot investigate the case without the permission of the magistrate. Next, can you arrest a person without warrant? The answer is no. In the non-cognizable cases, you cannot arrest a person without warrant. And my next question to you, if a person had committed multiple offenses, some of them are non-cognizable, and some of them are not cognizable in nature, then what will be the nature of this complete case? Yes, if a person had committed multiple offenses, some of them are non-cognizable, few of them are cognizable, what kind of case will be registered against such person? Yes, who will be giving me the right answer? Be quick. ये बहुत ज्यादा रैपिड रिवीजन है, ये तेज तरार चलना पड़ेगा सभी लोगों को. Yes, so George is giving me the right answer, that is the complete case will be considered to be a cognizable case. So where the case relates to two or more offenses from which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable case. ठीक है, offense होना अलग चीज है, case होना अलग चीज है. Offense is a particular act which you have done, which is punishable by law, but the moment it is being registered, investigation starts, then it will be becoming a case. So cognizable case chalega ya non-cognizable case chalega, that is very important. Reason being, because in a cognizable case altogether the things are very different, and in a non-cognizable case the things are very different, because you have to take a permission in a non-cognizable case, you cannot go for the arrest without warrant and so on. Now from section 155 itself in DGS 2019, there is a question with respect to the same point that we discussed right now, that what the authorities can do
It is, I'm reading a question, you people just give me the right answer to this question. The question is, which of the following is false? इनमें से कौन सा statement गलत है regarding the investigation in non-cognizable cases? Option number A, no police officer shall investigate a non-cognizable case without the order of the magistrate having power to try or to commit the case for trial. ये सही है या नहीं है? Is it true or not? First statement. The next one is, any police officer receiving such order may exercise the same powers in respect of the investigation, including the power of arrest without warrant of an as an officer in charge of the police station. क्या ये सही है? What is being written in option number B? If the police officer is having the same powers, can he go for the arrest without warrant, including arrest without warrant? क्या कर सकता है? Yes, everyone. Yes, Anika. Can he go for this, including the power to arrest without warrant? Yes, everyone. Can a police officer in a non-cognizable case arrest without warrant? अभी पढ़ा आप लोगों ने, अभी पढ़ा. It is written that any police officer may exercise such powers of investigation except the power to arrest without warrant. So this particular statement is appearing to be a false statement. Okay. Thereafter, you got the right answer. I think that option number B is the right answer, that this statement is false. He cannot go for the arrest without warrant. So the subsequent things are like where the case relates to two or more offenses, at least one is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable case. It is very true. Upon the receipt of the information of a commission of a cognizable case, the officer in charge of the police station shall enter a substance of information in a book in such form as the state government prescribe. ये भी सही है. तो option number B is the right answer. Option number B. इसका ध्यान रखना है ना. एक चीज, you people, what you do, like whenever you are appearing in the exam, जल्दबाजी नहीं करनी है. Don't be in a hurried manner, because in DGS also there are 200 questions you people have to mark. लेकिन सवाल पूरा पढ़ना है. Read the complete question, read all the options, and then only mark the right answer. Okay, coming to the next question, that is section number 156. It usually talks about like what is the power of a police officer. So the moment the cognizable case is there, the police officer has the power to go for the investigation. No permission of the magistrate is required before going for the investigation. It is written, any police officer may, without the order of the magistrate, investigate a cognizable offense. Number 2, this is important, clause number 2. Like if any police officer had conducted an investigation, but he was not empowered to investigate, so no proceeding of a police officer will be called in question at any stage. This is a saving provision which is giving a protection to the police officers. It is mentioning that no proceeding of a police officer in any such case shall at any stage be called on a ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate. So if a person was empowered to investigate or not, there is a saving clause here that if a person has investigated, it will not be taken up in question. And the last point is, that is 156.3, that where the magistrate is having the power to order investigation under 156.3 of the CRPC. I want to ask you people one question. Can you tell me that in which case the Honorable Supreme Court in 2007 has stated that the magistrate has the ancillary powers and he can order the proper investigation to be conducted by the police authorities? Any one of you who can give me the name of the judgment? It is not from these three which I had mentioned. It is another judgment. Yes. Any one of you? Yes or no? In which case the Honorable Supreme Court has stated that the judicial magistrate has the authority to order proper investigation. It is an ancillary power available to the magistrate. Yes, Manish, George, Medha, Anika, Ritu, Arzu is there. I'm asking this question to you. Have you people gone through the judgment, that is Shakiri Vasu versus State of UP? Shakiri Vasu versus State of UP. सुना इसका नाम? Shakiri Vasu versus State of UP. It is of 2000. It is of 2006, though in some areas it is in 2007 also. So this is a very important judgment with respect to 156.3. And other three important judgments that we are having is Mohammed Yusuf
versus Afaq Jahan. It is again related to 156.3, that is what kind of powers the magistrate is having. Another very important case which was passed in 2019 by the Honorable Supreme Court, that is Vinubhai Haribhai Malviya versus State of Gujarat. In Vinubhai Haribhai Malviya's case, the court has stated that even if the charge sheet has been submitted by the authorities in the magistrate's court, still the magistrate is having the competency to order further investigation in the matter and to collect some other evidences if there are such evidences. So it is very important. And another case recently in 2021, Babu Venkatesh versus State of Karnataka is there, in which the court stated that the applications which are being filed under 156.3 must be supported with affidavit. So this is important. Babu Venkatesh versus State of Karnataka, because most of the times the concerned informant files a frivolous application in the court of law and under 156.3, and that application ultimately is rejected. So court stated that if you are filing an application under 156.3, it must be supported with an affidavit. Thereafter, section number 157 is there. 157 is there, which is talking about the procedure of investigation. Now, this is basically an area where only the direct interpretation is to be taken up. The moment the police officer receives the information about an offense, immediately he has to forward the copy of the FIR to the magistrate. What the name is given to that particular copy which is being forwarded to the magistrate. आप लोग मुझे बताएंगे कि जब एफआईआर की एक कॉपी मैजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, उसको कानूनी भाषा में क्या कहा जाता है? व्हाट वी यूज्ड टू से दैट पर्टिकुलर थिंग? एनी वन ऑफ यू कैन गिव मी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? यस एवरीवन, दोज हु आर देयर इन द सेशन. बाकी लोग वर्ल्ड कप देख रहे हैं, आप लोग क्लास लगा रहे हैं. चलो, यस. What is the procedure for investigation is there under 157? My question to you is, whenever an FIR is lodged, a copy of the FIR is forwarded to the magistrate. Copy of the FIR is forwarded to the magistrate, that whether we are investigating this particular offense or we are not investigating this particular offense. But what is the name given to that particular copy which is being forwarded to the magistrate? No one is giving me the answer. Oh, very good. Pooja has given, that is occurrence report. Occurrence report is the right answer. That is a report which is being given by the authorities to the magistrate that we are investigating the case. Kartavya, it is not charge sheet. Charge sheet जब पूरा investigation खत्म हो जाएगा उसके बाद दी जाएगी. It is not a charge sheet. It is only that today you received an FIR, you lodged it, and then one copy of the FIR will be forwarded to the magistrate, and that copy is called as occurrence report. That is for the record of the magistrate, that how many FIRs are being lodged in his jurisdiction. So it is not a final report, it is only the occurrence report which we used to say. Final report जब पूरा investigation खत्म होगा उसके बाद दर्ज की जाती है 173 के clause number 2 के अंदर. I hope it is clear, Kartavya. Okay. Now the next thing is that when the procedure of investigation is there, mentioned in 157, it is saying that okay, what the police officer will be doing. So it is stated that the police officer will proceed to the spot, he will investigate the facts and circumstances of the case, etc. Whatever the discovery or arrest is required to be done, he will be doing that all. Now, there is 2 pointers which you people have to understand, that where the information is given to a police officer, that is FIR or non-cognizable of report, and the name of the offender is also disclosed, the offense is also not of a very serious nature, then the police officer is, if he is of the view that he is not required to proceed to the spot personally, then he will be not doing that. He may call the person in the police station itself under section 160 of the CRPC. He can be doing that, or under 41 capital A, notice of appearance can be issued that you have to come before us. So these are the 2 possibilities that we are having. Apart from this, if the statement of any victim, etc., is to be recorded, the person against whom the offense is committed, and victim is a woman, then in that case the recording is to be done at her residence or any place of her choice, and if practicable, then it should be recorded in the presence of her parents, guardian, or near relatives of worker or any social worker or of that particular locality.
Now, there are three important cases with respect to section number 157. That is Rabinder Mahato versus State of Jharkhand 2006 and Ombir Singh versus State of UP 2020 Supreme Court, whereby it is stated that if there is a delay in forwarding the copy of occurrence report to the magistrate, then it will not vitiate the trial. It will not vitiate the trial. It will not vitiate the trial. So अगर आपके पास आज एफआईआर की कॉपी आई, आपने तुरंत मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड नहीं किया, आपको करना चाहिए था. It should be forwarded forthwith, because in section 157 it is specified where any information is received or otherwise, then it shall be forthwith be forwarded to the magistrate. लिखा हो ना forthwith. लेकिन अगर आपने तुरंत नहीं भेजा, डिले है, तो it does not mean that the trial is going to be vitiated, but definitely if the delay is very to the very high extent, then definitely the magistrate will be having a suspicion with regard to the conduct of the investigating officer. So that is basically the conceptual thing you people have to understand. But yes, if the question comes that if there is a delay in sending the copy of the FIR to the magistrate, do it will vitiate the trial? The answer is no, it will not vitiate the trial. But yes, the court has to be cautious. कोर्ट को सावधानी बरतनी पड़ेगी. सावधानी अगर नहीं होगी तो गलत डिसीजंस आ सकते हैं. नेक्स्ट वन इज सेक्शन नंबर 159, दैट इज टॉकिंग अबाउट द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी. कि लुक, व्हाट इज 159? इसको अगर आप सिंपल टर्म्स में अगर लेके चले, इट स्टेट्स दैट इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द व्यू दैट वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द केस. अगर तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, then the things are good. But if the police officer is of the view that we are not investigating the case, and to the magistrate the occurrence report is forwarded, the magistrate is of the view that okay, it is required to conduct an investigation. The magistrate has the power to give directions for the investigation, or the magistrate has the competency to conduct a preliminary inquiry either himself or through his any subordinate officer, or the magistrate has third option to dispose of the matter in any other manner provided under the CRPC, that it can be disposed of as a complaint case also. So whenever the occurrence report is there, police officer is saying we are not investigating the case, magistrate has three options: either to order investigation under 159, or to conduct a preliminary inquiry either himself or to by a subordinate, and third one is to dispose of the matter by some other means. So तीन चीजें आप कर सकते हैं. इसके बाद section number 160 talks about that if the police officer is of the view that the person is required to be called in a police station or at some other place, any person whosoever is acquainted with the facts of the case, that person can be called up by the police authorities under section number 160 of the CRPC. 160 का notice भेजा जाएगा, and that person will be required to appear before the authorities. This notice can be issued to accused. This notice can be issued to the witnesses. This notice can also be issued to the victims also. किसी को भी ये नोटिस भेजा जा सकता है, बट किसको नहीं भेजा जाएगा ये आपके लिए जरूरी है. सो इफ एनी मेल पर्सन under the age of 15 years and above the age of 65 years, ऐसे लोगों को आप 160 के अंदर नहीं बुलाओगे. कोई भी व्यक्ति, मेल व्यक्ति जिसकी उम्र 15 साल से कम है या 65 साल से ज्यादा है, ऐसे लोगों को नहीं बुलाओगे. तो सिर्फ 15 से 65 के बीच का जो एज ग्रुप है मेल में, उनको आप बुला सकते हैं. वुमेन को या मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, दे कैन नॉट बी कॉल्ड in the police stations under 160 of the CRPC. This is important, and from here the MCQ usually comes. If the notice is being given to you under 160, you are acquainted with the facts, but you are not appearing, then under which provision of IPC proceedings can be there against you? Section number 174 IPC is there because you are not obeying the directions of a public servant. You are not obeying the notice. Next one is section number 161. Section 161, it primarily says that if any person supposed to be acquainted with the facts and the circumstances of the case, and the police officer want to orally examine such person, the oral examination can be there. And if the police officer finds that okay, the statement of such
person is required to be recorded also in writing. Under section 161 subsection 3, the statements can be recorded also. A separate and true record is to be maintained for each particular person's statement. But there is a restriction in 161 subsection 2, that is in consonance with article 20 clause number 3 of the Indian Constitution, that whatever the questions are asked to you, you are bound to answer uh, uh, those things truly, but you are excused from answering any question which has a tendency to expose you to a criminal charge or to a forfeiture. So that is very important. But if the exception is not there, like a normal question is being asked to you and you are not giving the right answer, or you are giving a false answer, then in that case there is a proceeding under section number 179 or 177 of the IPC can be there for refusing to give the answer or to give the false answers to the public servant. तो यहाँ पे IPC के दो sections जो हैं वो साथ में काम करते हैं. You must write it down in the concerned where act itself. It is 177 or 179 is also related with section number 161C RPC. Now, another important judgment with respect to this is Nandini Sarpati versus P.L. Dani. It is of 1973 Supreme Court. 1973. The case is very important because in this particular case, a woman was called to a police station, and which is a clear-cut violation of section 160 of the CRPC, and incriminating questions were being asked to her and she refused to give the answers. So all these areas, that is 160, 161 and article 20 clause 3 of the Indian Constitution, sabhi se ye aapka Nandini Satpathy ka judgment jo hai, it is related with that. Now with respect to section number 162, my question to you is, I will be taking 1 minute pause over here, and my question to you is, if any statement is recorded by a police officer during the course of investigation, what is the use of that statement? What is the use of that statement? Just give me the answer quickly. What is the use of that statement? Yes, everyone. Let me see who is giving me the right answer. What is the use of the statements recorded by the police officer during the course of investigation? Do that statements can be signed? क्या उन statements पे आप sign लोगे? George is saying corroborative evidence. No, George, the such statements cannot be used for corroboration purposes. Corroboration is restricted. Only one thing can be done. Pooja, no corroboration, no corroboration. कहाँ पढ़ लिया corroboration होता है भैया? कहाँ पढ़ लिया? No corroboration is permitted. Only contradictions. Only contradictions. If any statement is recorded by the police officer, it cannot be used for any purpose apart from the purposes given in section 162 itself. And that is, one purpose is, if you want to contradict a prosecution witness, then it can be done. But apart from the contradictions, you cannot do anything. So under section 145 of the Indian Evidence Act, there is a concept of cross-examination and contradiction. There are two parts of section 145. One is talking about cross-examination, other one is talking about contradictions, and only the contradictions are permissible. Corroboration nahi hoga. नहीं होगा, गलती मत करना. अंडर 161 जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं वो 162 से रेगुलेटेड रहेगी, एंड इट इज स्पेसिफाइड इन 162. नो स्टेटमेंट which is there recorded by a police officer during the course of investigation, if reduced into writing, be signed. तो ना सिग्नेचर लोगे, no statement be signed. Number 2, nor shall such statement or any police diary etc be used for any purpose. कोई पर्पस के लिए यूज नहीं होगा apart from the purposes specified here under. So what is the thing allowed? That is, if any witness is called as a prosecution witness and with respect to that witness contradiction is to be done, then on the basis of the statements recorded by the police officer under 161 you can go for the contradictions only. याद रखना इसको, corroboration मत करना, contradiction होगा सिर्फ. 145 के पार्ट नंबर 2 में एविडेंस एक्ट के अंदर लिखा गया है. सेक्शन 145 दो हिस्से में है. पहले हिस्से और दूसरे हिस्से के बीच में सेमी कॉलन लगेगा. एविडेंस एक्ट आप खोल के देखोगे, यू विल बी गेटिंग इट.
और दो चीजें यहाँ पे सेविंग क्लॉज में रखी गई हैं. सेविंग क्लॉज प्रोवाइड्स दैट इफ द पर्सन हु इज गिविंग द स्टेटमेंट टू द concerned police officer, after making the statement the person dies, and if that statement is relevant under section 32 clause 1 of the Indian Evidence Act as a dying declaration, then you can use that statement. And another saving provision is section number 27 of the Indian Evidence Act, which talks about the discovery statement. So if, because of the statement of a person, if that person was in a custody at the time of this, the statement is given and some discoveries are done, then that discovery portion is relevant under section number 27 of the Indian Evidence Act. Apart from this, no use of the statements recorded by the police officer during the course of investigation. Chali, coming to the next point, section number 163, direct section. Whenever the confessions etc. are to be recorded, no inducement, threat or promise is to be given to such person whose statement is being recorded. आप किसी भी तरीके का डर, दबाव, वादा करके किसी भी व्यक्ति का स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे. Naman is saying, sir, what if a person called was accused? What is the use of that statement? Naman, what happens that even if a person is an accused, his statement, because it is recorded by a police officer, either that confessional statement or it is a non-confessional statement, we cannot use that statement during the trial stage. Trial stage पे अगर use होगा तो केवल अगर उसकी statement के basis पे कुछ discoveries हुई हैं तब हम वो चीजें use कर सकते हैं. Otherwise, it will not be allowed to be used in the court of law. ओके, इट विल नॉट बी अलाउड. अगर कॉन्ट्राडिक्शन भी होगा तो सिर्फ प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस का कॉन्ट्राडिक्शन होता है, डिफेंस के विटनेसेस के कॉन्ट्राडिक्शंस 162 के अंदर परमिसिबल नहीं है. तो 162 इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ अ प्रोविजन, प्रोवाइजोस के साथ काम करता है एंड प्रोवाइजोस को रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच में ही पढ़ा जाता है, कभी भी आप लिबरल सेंस में नहीं पढ़ सकते. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट. मैं यहाँ पे बहुत, देखो ऐसा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू पीपल, कि ये क्लासेस रैपिड रिवीजन राउंड है, तो ये पढ़ने का मजा तब आता है जब आपने पूरा सीआरपीसी बहुत अच्छे से किया हुआ है. अगर नहीं किया है और कर रहे हो तो उसमें भी कोई बात नहीं, लेकिन दोज हु आर वेरी न्यू टू द सीआरपीसी उनके लिए ये एकदम से समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर देयर इन्वॉल्वड इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अब उस एक एक क्लास को पढ़ाने में हमें 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं 162 समझाने में, लेकिन यहाँ पे 2 मिनट में करवाना पड़ रहा है. ये हमारी विवशता है और एग्जाम की रिक्वायरमेंट है. चलिए, coming to the next section, that is section number 164 of the CRPC, that is how the confessions and other statements are to be recorded by the magistrate. So who is entitled to record it? That is metropolitan magistrate and judicial magistrate. Now the question comes, आप लोगों से मेरा सवाल है, that at what stage the statement under 164 or the confessional statement under 164 is being recorded? किस स्टेज पे रिकॉर्ड किया जाएगा? जल्दी से आंसर देंगे, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है. And at what time the statement will be recorded? Investigation, inquiry or trial? Investigation, inquiry or trial? किस स्टेज पे 164 की स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा? Yes everyone, I need the answer from you people. वेरी गुड, पूजा हैज गिवन मी द वेरी राइट आंसर कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इट विल बी रिकॉर्डेड. जॉर्ज, ध्यान से सुन लो, रीड इट and I will tell you where it is written, that during the investigation it will be recorded, but if after the investigation, like for example the charge sheet is submitted in the court of law but the court has not yet conducted the inquiry portion, court has not taken the cognizance, in the midwhile of this also the statement of 164 can be recorded. So ये बहुत ही important question है आपके एग्जाम को लेके. just see 164 para number 1, that any metropolitan magistrate or judicial magistrate, whether or not he has the jurisdiction, जरूरी नहीं है कि आपका jurisdiction हो उस केस में, record a confession or a statement made to him in the course of investigation under this chapter or under any law for a time being in force or at any time afterward. मतलब इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद भी कर सकते हो, बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल. लेकिन वंस द इंक्वायरी और ट्रायल स्टार्ट्स 164 will not be applicable. चलिए, coming to the next question related to 164 itself. You people tell me that if a person was in police custody, he was produced before the magistrate for the recording of the confession. If the person refuses to get his confessional statement recorded, क्या आप दोबारा से उसको पुलिस कस्टडी में भेजोगे?
can you will send that person again to the police custody? Yes, if a person was there from a police custody, he stated that I am ready to give the confession before the court. He's produced before the magistrate and he refuses over there. Then, in such a case, he will not be forwarded again to the police custody. He will not be forwarded again to the police custody. Very, very important thing. Now, there are certain parameters given in section number 164, clause number 2, that magistrate must record the confession only when he is of the view that the confessional statement is made voluntarily. If the confessional statement is not voluntarily given, he will not record the confessional statement. And whenever any confessional statement is being recorded, generally on the confessional statement you will not be giving any oath etc to the accused person. Accused को oath आप नहीं दिलवा सकते हैं. But whenever it is some other kind of a statement, whenever it is some other kind of a statement which is not a confessional statement, this another statement can be of the accused, it can be of the witnesses etc, then clause number 5 will be there. And in clause number 5, any statement other than confession shall be recorded in such manner as hereinafter provided, and the magistrate shall have the power to administer oath to the person whose statement is being recorded. तो अगर confession को छोड़ के कोई और statement है, आप वो दिलवा सकते हैं. इसके साथ साथ the next thing is 5 capital है, you just have a bare reading to it. That is, whenever the offences are against women and the statement is to be recorded, then immediately the moment the FIR etc is lodged, as soon as the commission of the offence is there and notice is there to the police, the statement will be recorded under 164 clause number 5 capital A also. If the victim is disabled, temporarily or permanently, mentally or physically disabled है, there should be the availability of the interpreter or special educator who will be there, videography will be there. ठीक है, तो ये कुछ एक चीजों का आपको ध्यान रखना है. 164 capital A that talks about the medical examination of the rape victim. इसमें सिर्फ आपको सेक्शन ही जनरली पूछा जाता है. 165 not that much relevant, only the marginal heading with respect to the search कहाँ पे होता है. Now you people just come to the next section, that is important area, 167 of the CRPC. Now 167 CRPC, you will be getting certain questions in the exam, I believe, from 167, because a lot of changes are there with respect to the judicial interpretations. As section 57 provides that within 24 hours, you have to produce that person before the nearest judicial magistrate. Along with the production of the accused, the case diary will also be produced before the magistrate. The copy of the entries in the diary made under 172 of the CRPC, that is case diary. Now, because the person is produced, the police officers are demanding the police remand. What is the maximum extension of police remand which can be given by the court? Yes, what is the maximum extension of police remand which can be given by the court? That is 15 days only. Only the initial 15 days period can be there to which the police remand can be given. But once the initial 15 days are over, एक बार आपके पहले 15 दिन खत्म हो गए, आज आपने प्रोडक्शन करवाई, 15 दिन तक आपको पुलिस रिमांड मिल सकता था, शायद ना मिला हो, but once the initial 15 days are over, thereafter you will not be getting any police remand. This was decided by the Honorable Supreme Court in a very, very important case, that is Anupam J. Kulkarni's case. Anupam J. Kulkarni's case, that is Anupam J. Kulkarni versus State through CBI 1992. But what is important for you people, mark my words, this question can be there in the exam, that in which case the Honorable Supreme Court has stated that the judgment of Anupam Kulkarni is required to be revisited, and that is V. Senthil Balaji versus the state in 7th of August 2023, this judgment was pronounced by the court, and it was stated that the Supreme Court has challenged the interpretation provided by the 1992 judgment, that is CBI versus Anupam J. Kulkarni, and which asserted that the police or investigation agency cannot seek the custody after the initial 15 days of arrest. So Anupam J. Kulkarni's judgment is required to be revisited, that is being decided and stated by the Honorable Supreme Court in the recent judgment, that is V. Senthil Balaji's versus the state represented by deputy directors. So coming to the next point, which is relevant with respect to the section number 167 of the CRPC. So what will be the maximum extension of the imprisonment? Like if the offense is punishable with more than 10 years,
more than 10 years or death or life, then the maximum detention period will be 90 days. And if it is below 10 years period, then the maximum extension can be of 60 days period. इसके beyond आप नहीं रख सकते. Once the 90 days or 60 days period is over, charge sheet is not submitted, what right will be there available to the accused person? कौन सा right उसको मिल जाएगा? That right is available, that is of default bail. The right is of default bail. Yes, Naman, it is saying that they will be it is required to be revisited, but अभी तक कुछ overturn नहीं किया है. Senthil Balaji's judgment is only on the point that Anupam J. Kulkarni's judgment is required to be revisited, and the interpretation should be again looked after by the court. But it does not mean that it has been overruled. अभी overrule नहीं हुआ है, ठीक है? And what I believe, because as these CRPC etc. and the other laws are going to be repealed very soon. After that, the new enactments will be there. So in those in those new laws, these kind of provisions are very well taken care of. So Parliament has taken care of, and I believe that it is not required to change the interpretation of the Anupam J. Kulkarni, because in the new law, the Parliament has taken care of such kind of things. So that is a different part. But yes, whatever is still applicable today, that is Anupam J. Kulkarni judgment is still applicable. But the Senthil Balaji's judgment is a judgment from which a question can be there to you people. So that is what is I am asking. Okay. Now the next thing is if the default bail is there, chapter number 33 of the CRPC will be applicable. But in the cases of default bail, it is not required to prove the merits of the application, that why the court should grant you bail. You must have to give to the court that okay, the 60 or 90 days period is over, and the charge sheet is not yet filed, and I am entitled to get the default bail. Now, certain pointers with respect to the MCQs, that is, any magistrate of second class, if he is not empowered by the High Court, he cannot give the police remand. Magistrate second class के पुलिस कस्टडी का ऑर्डर नहीं दे सकते हैं unless and until High Court has empowered him to do so. इसके बाद दो तीन चीजें आप यहाँ पे अपने बेरिक्स पे मार्क करे होंगे. आई थिंक जब आपने कॉन्सेप्चुअल क्लासेस लगाई होंगी तो इट might have been done by you, that if any woman is there who is under the 18 years of age, then custody of the woman should not be in the judicial custody, rather she will be there in the remand home or in a recognized social institution etc. उनको आप जेल में बंद करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है? इनका आपको ध्यान रखना है. बस इसके साथ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मान लीजिए इफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल, if the judicial magistrate is not available, only the executive magistrate is available, and the person is produced before the executive magistrate, what is the maximum detention period which can be granted by the executive magistrate? That is my question. Let me see who give me the right answer. If the person is produced before the executive magistrate, what is the maximum extension of detention period can be there? So Anika gave me the right answer very well. It is 7 days maximum period which can be given. Within 7 days, the person is required to be produced before the judicial magistrate, and if the production is not done before the judicial magistrate within 7 days, the person will be entitled to be released on default bail. चलो आगे बढ़ते हैं. Clause number 5 and clause number 6 are relevant. Clause number 5 and clause number 6 are relevant with respect to the MCQs. That if the case is triable by magistrate is a summons case and the investigation is not concluded within the 6 months period, then in that case the magistrate can order the police authority to stop the investigation. ठीक है कि एक समन्स केस है, 6 महीने तक हो गए, आपसे इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो मैजिस्ट्रेट साहब चाहें तो इन्वेस्टिगेशन को रोक सकते हैं. ही कैन ऑर्डर फॉर द स्टॉपिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. But if the magistrate had stopped the investigation, but the session judge stated that no, the investigation will be required to be continued, तो सेशन जज मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को वेकेट करवा सकते हैं. सेशन जज हैज दैट कॉम्पिटेंसी टू गो फॉर द वेकेशन ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द मैजिस्ट्रेट. तो इसका आपको ध्यान रखना है. इसके बाद केसेस की जहां तक बात है, there are 4 cases, 5 cases
it is written over here. Anupam J. Kulkarni judgment that gave the interpretation that the police remand will only be for the 15 days period, and after that only the judicial custody will be there. Another very important case recently, it was passed in 2022, that is Serious Fraud Investigation Office versus Rahul Modi, 2022 Supreme Court. This judgment is also on the concept of that default bail is an indefeasible right. Default bail is indefeasible right. Okay, next is राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम, जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी ऑफेंस की मैक्सिमम सजा 10 साल है, 10 साल से ज्यादा नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ जो 60 डेज वाला पीरियड होता है वो चलता है, that 60 days to the maximum the person can be detained. Union of India versus Nirala Yadav, again on the same point, that is the default bill is an indefeasible right, and V Senthil Balaji, I had told you people कि इसमें अभी अभी कोर्ट ने क्या किया है. ठीक है जी. चलिए, coming to the next point, the question comes that where the closure report is there, or which section relates to the closure report. Section number 169, you people mark that if there is no sufficient evidence available against the accused person, then the authorities will release that person after executing bond, etc. That person will be released, and the closure report will be submitted by the authorities before the court under section 173 of the CRPC. So 169 read with 173 CRPC talks about the concept of the closure report. Next point is, that is section number 170, that if the person against whom the investigation has been conducted, sufficient evidences were found against such person, the person will be produced before the magistrate along with the charge sheet. But one thing you people have to understand, it is mentioned in section 170 that the person will be forwarded under custody. The person will be forwarded under custody. So मान लीजिए the person was on bail and the charge sheet is filed now, then as per section 170, what happens that the police officer will detain that person again, then they will be forwarding that person before the magistrate. But on this point, a very, very important judgment was there by the Honorable Supreme Court. Any one of you who can tell me the name of that judgment, जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि if the person was on bail and subsequently the investigation was going on and the charge sheet is filed, it is not required to arrest him again, to detain him and to forward him in custody before the magistrate. आप उसको notice दें, give him the notice and he will be appearing before the court. Which judgment is related to this point? Very, very important judgment. कौन बताएगा? Who will tell me? It is Siddharth versus State of UP. Siddharth versus State of UP. 2021. Very, very important judgment. यहाँ पे साफ से मैं लिख नहीं पाया. It is Siddharth versus State of UP. It is of, I believe, 2021 Supreme Court. So in this case, the court stated that in section 170, it is specified that if a person is to be produced before the magistrate, the person will be taken up in custody, then he will be forwarded before the magistrate. But the question comes, okay, that the investigation was going on, person was on bail, but subsequently the charge sheet is filed because police authorities were conducting the investigation, and at the moment the charge sheet is required to be filed, section 170 says that okay, the police will again arrest that person and they will be forwarding the person to the custody. So the court stated no, it is not required, because if the person is already on bail, why you are arresting that person again? He is coming to the court and he is making an application for regular bail, etc. It is not required. You just give a notice to that person will appear before the authorities. Next section, section number 172, that is important. That is case diary. कहाँ पे है? Case diary is there in section number 172. Case diary का use क्या होगा? What will be the use of the case diary? Subsection 2 states that any criminal court may send for the police diaries of a case under a inquiry or trial and may use such diary not as an evidence. Underline कर लेना. Not as an evidence, but only for the purposes of aid. आप केस डायरी को एविडेंस के तौर पे कोर्ट में नहीं रख सकते, लेकिन सिर्फ केस डायरी से सहायता ली जा सकती है, ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ एडिंग इन द इंक्वायरी और ट्रायल. इसका ध्यान रखना है. केस डायरी में क्या होगा? व्हाटएवर यू आर डूइंग एवरी डे विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड. जो 161 के बयान है वो भी उसमें लिखे जाते हैं. दैट इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस. बट क्या केस डायरी को एक्यूज्ड देख सकता है? द आंसर इज नो. एक्यूज्ड इज हैविंग नो कॉम्पिटेंसी टू कॉल फॉर और टू आस्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केस डायरी. बट
अगर पुलिस ऑफिसर्स ने, if the police officer has used the case diary to refresh their memory, or the police officers are being contradicted by the court on the basis of the case diary, then the accused person can also refer certain entries of the case diary. तो ये case diary का limited use है. अगर वैसे तो accused case diary नहीं देख सकता, वैसे तो नहीं देख सकता, लेकिन कुछ एक केसेस में उनको मौका मिल सकता है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने अपनी मेमोरी रिफ्रेश करी है तब ये हो सकता है, या फिर पुलिस ऑफिसर को अगर कोर्ट ने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया तब वो केस डायरी के बेसिस पे तब एक्यूज केस डायरी को देख सकता है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. Yes, coming to the next portion of the session now, that is case diary के ऊपर कुछ एक cases हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं. Like what are the cases there with respect to the case diary, and the cases are, that is Niranjan versus the state of UP. It is of 1999. ये case diary के लिए relevant case generally आ जाता है exams में, usually it comes. Thereafter, Shamshul Kanwar versus State of UP, again on the same point that accused has no right to see the case diary unless and until the police officer has used it for refreshing his memory, or the court has used it for contradiction of the concerned police officer. Two other cases, you may write it down, और अगर आप लिखना चाह रहे हो तो लिख लो केसेस के नाम, MCQs भी कभी कभी आ जाते हैं. So after this, I believe that you people are clear whatever the things which we had discussed till now. Yes, everyone, Naman, Pooja, Anika, Medha, Ritu, all those who are present in the session, I hope it is clear. Yes, so after this, the next area of discussion will be section number 173, that is how the charge sheet is to be submitted and so on. So यहाँ से कुछ एक सवाल आपको जरूर आते हैं, like what are the questions which can be there from 173. Number one is that if any cases there, any offenses there under these sections like 376 onwards, rape, etc., and the associated offenses are there, the investigation must be completed within 2 months. It is important with respect to the multiple choice questions को mark कर लीजिएगा. ठीक है, MCQ में तो यहीं से आ जाता है कि if the offense is under 376, within how much time the investigation must be completed, it must be completed within 2 months. Normal offenses के लिए कोई time limit नहीं होती है, but यहाँ इसके लिए time limit है. Another question which usually comes from 173, that is where the further investigation is mentioned in CRPC. So 173 का clause number 8 है. It talks about further investigations, and once the charge sheet is filed, further investigations can still be conducted by the authorities, and after the further investigation is there, supplementary charge sheets will be filed by the authorities. Supplementary charge sheet, ठीक है. और सप्लीमेंट्री चार्ज शीट में वही कुछ आता है जो आप नॉर्मल चार्ज शीट में लिख के देते हो. अब 2-3 चीजें, I believe that you people are aware of these basic things, like whatever the documents are there which you had filed in the court of law, the same documents will be handed over to the opposite party. If it is convenient for the authorities so to do, the authorities will do it, and if it is not convenient so to do, the court will do it under section 207 of the CRPC. So I believe you people have gone through with all these sections. एक बार सारे लोग आज के सेशन को लाइक कर दें तो हम आगे बढ़ेंगे. चलिए, so after this, look, certain cases are there with respect to charge sheet. That is Abhinandan Jha versus Dinesh Mishra, a very, very important landmark judgment. Very, very important landmark judgment. That it states that if the authorities had filed the closure report in the court of law, but still the court is of the view that I will be taking the cognizance, the court can go for that. If the parties, the authorities had filed the
charge sheet, but the court finds that okay, there is no prima facie evidence, I'm not going to take the cognizance, the court may refuse to go for that. So Abhinandan Jha versus Dinesh Mishra is on the point that court is not bound by the investigation conducted by the authorities. Court उससे बाध्य नहीं होता है. ठीक है. इसके बाद another important case, that is वीनू भाई हरि भाई मालविया versus state of Gujarat. As I stated earlier also कि जितने भी आपके further investigation के cases हैं, even the charge sheet is being filed by the court, by the authorities, but the magistrate is of the view that still some further investigation can be conducted and some new evidences can be there, so the magistrate has the competency to go for it. And there is a case on the protest petition. What is a protest petition? Protest petition is the situation where the authorities are filing the closure report. They are saying that we don't find any evidence in this particular case, but the informant is of the view that no, the court should try the matter. So in that case, the informant of the offense will be filing a protest petition in the court of law, and with respect to the protest petition, the court will be looking after that, okay, whether we should be taking cognizance or not. So isme there is an important judgment passed by the Honorable Supreme Court in 2019, that is Vishnu Kumar Tiwari versus State of Uttar Pradesh 2019 Supreme Court. तो ये protest petition पे latest judgment हमारे पास है, that it is not the point that the court is bound by the investigation conducted by the authorities. Court uske beyond जा सकता है. Thereafter, section number 174, which is talking about the basic thing that if the death is not natural death, it is accidental, suicidal, or by animal, machinery, accidental death, etc., then in such cases, to find out that what is the apparent cause of the death, it is something where 174 talks about, that is inquest will be conducted. Inquest means an inquisitorial proceedings will be conducted. It will be conducted by the executive magistrate. Executive magistrate will be conducting the inquest, and thereafter the inquest report will be prepared, in which the executive magistrate will be mentioning that what is the apparent cause of the death. क्योंकि internal causes क्या हैं वो डॉक्टर साहब बताते हैं. Internal causes will be told by the doctor, but yes, after looking at the body, looking at the situation spot, you can say that okay, these things appears to be that apparent cause of the death. So that is 174. अब 174 से important क्या है इस inquest area से, you people just see 176 पे आओ आप, 176 पे. तो 176 states that कि if there is a custodial death, if there is custodial death, or if there is a person who has disappeared from the custody, or there is a rape against a woman which is there in a police custody. ठीक है, किसी महिला के अगेंस्ट पुलिस कस्टडी में अगर रेप हुआ है, सो ऐसे केसेस में who will be conducting the inquest, that is the judicial magistrate or the metropolitan magistrate will be conducting the inquest. तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉर्मली अगर सवाल आता है दैट हु विल बी कंडक्टिंग द इंक्वेस्ट, दैट इज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, लेकिन अगर कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल रेप की बात आ जाएगी तो इट विल बी बीइंग कंडक्टेड बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स. इसके साथ साथ इफ द इंक्वेस्ट इज कंडक्टेड with respect to a dead body, you find out that what is the apparent cause of the death, that within 24 hours you have to forward the body to be examined by the nearest civil surgeon or any qualified medical person who is appointed by the government, and if it is not possible to do within 24 hours, you have to record the reasons in writing for this. Okay, so this is your chapter number 12. That is a very, very important area. A lot of question comes from this particular portion of the CRPC. The next area, that is chapter number 13, talking about the jurisdiction of the criminal courts with respect to the inquiries and trials. Normally 177 is relevant, that wherever the offense is committed, that place will be having the place of inquiry and trial. But there are some other situations also, like where the offense is committed partly in one area, partly in another, then both places will be having the jurisdiction. If the offense is a continuing nature of an offense, like for example kidnapping, etc., these are continuing offenses, so wherever the court's jurisdiction is, wherever the offense continues, that place will be getting the jurisdiction. इसका 178 का ध्यान रखेंगे. इसके बाद आप लोग 170
9 कि अगर कोई ऑफेंस है जिसका कॉन्सिक्वेंस कहीं और होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अबेटमेंट, सो यू अबेटेड वन थिंग एंड द कॉन्सिक्वेंस इज समवेयर एल्स, सो 179 इज सेइंग वेयरएवर द एक्ट इज डन और वेयरएवर द कॉन्सिक्वेंसेस हैज इंस्यूड, दोनों जगह पे जुरिसडिक्शन जो है वो रहेगा। इसके बाद 181 में आपको जाना है। 181 में primarily the question which comes is from 181 subsection 1 and subsection 2 that if any person is kidnapped or abducted, then which place will be having the jurisdiction? So wherever the person kidnapped or abducted was conveyed, concealed or detained, तीनों जगह पे jurisdiction जो है कोर्ट्स का बन जाएगा। After this, with respect to the exam, I believe that section number 183 is relevant. Like for example, a person is traveling from a train, and in a train the theft has been committed against him. So on where the offense is on journey, then wherever that person has gone through, every place will be having the jurisdiction. तो ट्रेन में आपको नहीं पता कि चोरी कहाँ हुई, तो कहीं पे भी jurisdiction जो है वो बन जाता है। 183 मार्क करके रखेंगे। इसके बाद आपका 187 and 188, these are basically related with the IPC section number 3 and section number 4, whenever there is the extraterritorial operations of the IPC। section number 4 को अगर हम मार्क करें, 3 को ना भी करें, 4 को कर लें, so it is directly associated with that। ये section number 188 होगा यहाँ पे, it is 188 and 189 यहाँ होगा, ठीक है। So if the offense is committed outside India, then how the evidences will be collected, which place will be having the jurisdiction, तो उसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है that the place where the person is found, that place will be considered to the place where the offense has been committed, माना जाएगा। जैसे होता क्या है, एक्स्ट्रेडिशन के केसेस में ज्यादा चलता है सिचुएशन that a person has committed an offense in abroad and then he come to India. It is an Indian citizen who has committed an offense. Now, if that person, against that person, the extradition proceedings are there, and within India that person is found somewhere, so wherever that person is found, we will consider that that person has committed the offense in that particular place itself, जहाँ पे वो मिला वहीं पे उसने अपराध किया था, ऐसा माना जाता है। और उसी तरीके से इंक्वायरी और ट्रायल के लिए कोर्ट्स का जुरिसडिक्शन जो है वो बनेगा। लेकिन अगर उसका एक्स्ट्राडिशन हमने कर दिया तो वो एक अलग बात है, ही कैन बी एक्स्ट्राडाइटेड आल्सो, बट इट इज नॉट मैंडेटरी दैट द पर्सन विल बी एक्स्ट्राडाइटेड, उसका ट्रायल इंडिया में भी चल सकता है। Thereafter section number 190 is there, 190 is there, that how the courts used to take the cognizance। तीन तरीके से cognizance लिया जाता है, on complaint, on police report and on information basis। Complaint cases में usually section number 200 onwards we proceed. In the police report cases, chapter number 12 is there, that we have done, and in the information cases it is basically suo motu, the magistrate gets information from anywhere and he can take the cognizance। The question comes that who takes the cognizance? So it is only the judicial magistrate of first class who is competent enough to take the cognizance। सिर्फ judicial magistrate first class ही cognizance जो है वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ as you people can see in DGS 2019, there is a question from this particular area that a magistrate taking cognizance under 190 of any offense upon complaint, upon police report, upon information. So everything is important given in 190. Now the next thing which is relevant for you people, that is कि do the court of session can take direct cognizance? Do the court of session can take direct cognizance under section 193? थोड़ा सा सेक्शन यहाँ पे आगे पीछे हो गए, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। सो क्या कोर्ट ऑफ सेशंस डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं? जनरली द आंसर इज नो। कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेंगे बिकॉज टेकिंग ऑफ द कॉग्निजेंस अपीयर्स टू बी अ मैजिस्ट्रियल फंक्शन, एंड सेक्शन 193 ऑफ द आईपीसी states that except as otherwise provided, the court of session will not take direct cognizance। any one of you who will tell me that under which provision court of session can take direct cognizance? normally तो नहीं लेते, exception है, अगर कहीं का exception काम करेगी, लेकिन कहाँ पे ले सकते हैं? where you can go for taking of the direct cognizance court of session? कौन बताएगा? let me see who will give me the right answer। very good Anika, it is section number 199, section number 199 subsection number 2, and any other provision? Manish, Naman, Medha, any other provision apart from 199? एक ही याद आ रहा है। चलो दूसरा हम बता देते हैं, सेक्शन नंबर 319 सीआरपीसी, 319 सीआरपीसी that talks about the concept of additional prosecution।
कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल, मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशंस के सामने ट्रायल चल रहा है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल सम न्यू पर्सन इज टू बी मेड एज एन एक्यूज। जब एविडेंसेस लीड हुए, हमें पता लगा कि कोई और भी व्यक्ति केस में इन्वॉल्व है, तो हम उसके अगेंस्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस जो है 319 के अंदर एडिशनली उस व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करने के लिए हम ले लेंगे, और यहाँ पे मजिस्ट्रेट को नहीं भेजा जाएगा केस कॉग्निजेंस लेने के लिए उस नए एक्यूज के लिए, रेदर कोर्ट ऑफ सेशन कैन टेक दी डायरेक्ट कॉग्निजेंस। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट एरिया। ये मैंने कुछ एक चीजें मार्क की हैं, आप लोग अपने बेरेक पे मार्क कर लेना। इट इज सेक्शन नंबर 195 आई बिलीव, section number 195, that with respect to the public servants, how the court is going to take the cognizance. So section number 195 में, if the offense is against public servant, then the court will take the cognizance only when the complaint is in writing given by the public servant. तो ये एक चीज है। अगर 172 से 188 आईपीसी के बीच में कोई अपराध हुआ, 172 till 188, if any offense is being committed against a public servant, and in such case the cognizance is required to be taken, the public servant is required to make a complaint in writing, and then only the court is going to take the cognizance. यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट नहीं आती, कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स चलती है। दूसरा कि अगर कोई ऑफेंस कोर्ट के अंदर हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन अ फॉल्स एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और यू आर ट्राइंग टू टैम्पर any evidence etc, like 193 to 196, 199 200 etc and so on, whatever the provisions are mentioned over here, if the complaint is there by court, क्योंकि कोर्ट के अंदर आप गलत एविडेंस दे रहे थे, आपके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो कोर्ट को ही एक सो मोटो एक राइटिंग में कंप्लेंट बना के, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के थ्रू हम करवाते हैं, वो देके हम केस आगे चला लेते हैं। नए ऑफेंस का नया केस चल सकता है। सो इट इज ओनली फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सवाल आ जाए तो ध्यान में रखना। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, दैट सीआरपीसी सेक्शन 195 कैपिटल ए रिलेट्स टू विच प्रोविजन ऑफ द आईपीसी। बड़ा ही सीधा आंसर है, आईपीसी का 195 कैपिटल ए और सीआरपीसी का 195 कैपिटल ए दोनों ही एक जैसी बात करते हैं, दैट इफ एनी विटनेस इज देयर टू whom the threat is given, then what will be the process, what is the punishment. So 195 capital A of IPC as well as 195 capital A of CRPC, both are talking about the same thing. ये coincidentally हुआ या intentionally हुआ ये पता नहीं, लेकिन दोनों प्रावधान एक जैसी बात करते हैं, IPC का और एक CRPC का। इसके साथ साथ आपका just come to section number 198, यहाँ से कुछ एक सवाल आते हैं एग्जाम्स में। 198 कि अगर कभी भी डेफामेशन से रिलेटेड कोई ऑफेंस है तो क्या होगा, मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस है तब क्या होगा, तो 198 199 इनकी बात करेंगे। इफ द ऑफेंसेस आर रिलेटेड टू मैरिज, देन द कोर्ट विल टेक द कॉग्निजेंस ऑन द कंप्लेंट बाय द एग्रीव्ड पर्सन, प्रोवाइडेड दैट कि अगर जो आपका एग्रीव्ड है, हर एज इज बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स, या वो लुनेटिक है, इंसेन है, बिकॉज ऑफ सिकनेस दे कैन नॉट फाइल द कंप्लेंट, देन because of the leave, after the leave of the court, any other person on his behalf or her behalf can file a complaint in the court of law. इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके क्लॉज नंबर सी का ध्यान रखेंगे, दो it is now not applicable because adultery is not now in IPC. So because adultery is not there, तो उसका जो काउंटर पार्ट प्रोसीजरल लॉ में था, ये सॉरी क्लॉज नंबर 2 में आएगा adultery, मतलब 497 है ना। So if adultery is not there, then that provision will also be not applicable, which is there in CRPC. So इसको तो अब आप क्लॉज नंबर 2 में तो कोई पढ़ने का मतलब नहीं है, ओनली 498 के लिए रिलेवेंसी है कि हस्बैंड ऑफ अ वुमन शैल बी डीम्ड टू बी द एग्रीव्ड, ये अब यूज नहीं होता है आफ्टर द जोसेफ शाइन्स जजमेंट। ठीक है, ये इररिलेवेंट हो चुका है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन अगर कभी भी बाइगेमी एटसेट्रा से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, ये 494 495 वाले ऑफेंसेस हैं, तो इट इज रिटन दैट देयर शुड बी द कंप्लेंट गिवन बाय द either by the concerned aggrieved person, जबकि वाइफ हो सकती है, या फिर फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन डॉटर एटसेट्रा, वो लोग भी जो है दे सकते हैं। सवाल उठता है कि रिलेशन, अगर कोई रिलेटिव दे रहा है तो उसका रिलेशन कैसा हो सकता है, तो ब्लड मैरिज और एडॉप्शन से रिलेटेड व्यक्ति आपसे हो सकता है जो भी कंप्लेंट फाइल कर रहा है। 198 कैपिटल ए में आओ जरा। 198 कैपिटल ए, ये इट टॉक्स अबाउट 498 कैपिटल ए कि अगर 498 कैपिटल ए दैट इज द ऑफेंस ऑफ क्रूरलिटी, उसका कोई केस चलाना है कोर्ट के अंदर, तो कैसे केस आएगा। सो कोर्ट विल बी टेकिंग अप द कॉग्निजेंस ऑन द पुलिस रिपोर्ट ओनली और ऑन द कंप्लेंट मेड बाय द पर्सन एग्रीव्ड और बाय हर फादर मदर ब्रदर सिस्टर और फादर्स और मदर्स ब्रदर और सिस्टर। मतलब
फादर मदर ब्रदर सिस्टर कर ही सकते हैं, लेकिन फादर्स और मदर्स ब्रदर और सिस्टर मतलब चाचा ताया बुआ मासी ये लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। बट दिस शुड बी द लीव ऑफ द कोर्ट, दिस शुड बी द लीव ऑफ द कोर्ट। 198 कैपिटल बी related with 376b, that if two persons husband and wife are living under a separation and a husband is having a sexual intercourse with his wife, which is an offense under 376b because they were living separately, so in that case the wife can file a complaint against her husband and only on the complaint the court will be taking the cognizance. नॉर्मली ऐसे केसेस में पुलिस रिपोर्ट वाला सिचुएशन नहीं आता है, कंप्लेंट आएगा तो हम कॉग्निजेंस लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। 199 में इट इज टॉकिंग अबाउट प्रोसिक्यूशन फॉर डेफामेशन। अगर कभी भी डेफामेशन का केस हुआ तो कंप्लेंट ही फाइल की जाती है, एक्सेप्ट अपॉन द कंप्लेंट only you will be taking up the cognizance. No courts will take the cognizance except upon a complaint of the person aggrieved. लेकिन अगर कोई भी हमारा dignitary, if any person who is a high dignitary in the authority, if the defamation is of that person, then who will be filing the complaint? Who will be filing the complaint? इसके लास्ट में लिखा हुआ है complaint should be in writing by the public prosecutor, ठीक है जी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको सीधा सीधा कोर्ट ऑफ सेशन में मामला लेके जाना है बिकॉज हाई डिग्नेटरी का डेफामेशन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल बी मेकिंग अ कंप्लेंट इन राइटिंग within how much time this complaint is required to be filed. So it is mentioned in clause number 5 that no court of session will take the direct cognizance unless it is filed within 6 months, 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर अगर कंप्लेंट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो जो नॉर्मल प्रोसेस है वैसे आप चला सकते हो, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन के अगर सामने आपने कॉग्निजेंस दिलवाना है तो 6 महीने के अंदर ही केस को लेके जाना पड़ेगा, ठीक है जी। आई होप इट इज क्लियर टिल सेक्शन नंबर 199, व्हाटएवर इज रेलेवेंट दैट वी हैव डिस्कस्ड। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 15। थक तो नहीं गए आप लोग? यस, सेक्शन 100 तक हमने कल कर लिया था, अभी सेक्शन 200 तक आज हो गया, अब 200 ऑनवर्ड्स नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। साथ साथ में क्या कर रहे हो, मैच देख रहे हो? चलिए देखो, सेक्शन 200 की जहां तक बात है, नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लेंट केसेस, एंड विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 200 टिल सेक्शन 300 a lot of things are very important, one by one I will be taking up these things now। कह रहा है कि एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, whenever the complaint is filed in the court of law, the court is going to firstly examine the complainant as well as if any witness is there, the court may examine that witness also, ठीक है, court can go for that। But whenever the complaint is there, you people have yesterday done with me, that is the definition of the complaint under section number 2 clause number D, so that is there, that how the complaint will be there in writing etc. But whenever the complaint is filed, the magistrate will be examining the complainant, and if any witness is there, the court may examine such person also, and the substance of the examination will be reduced into writing, like the court has asked the questions, then the substance will be recorded and reduced into writing, it will be signed by the complainant and by the witnesses and by the magistrate। तीनों लोग उसमें साइन करते हैं। सवाल आ जाता है कि साइन कौन करेगा, तो तीनों साइन करेंगे, कंप्लेनेंट, अगर कोई विटनेस है वो भी, और मैजिस्ट्रेट साहब भी करेंगे, ठीक है। बट कौन से केसेस में आपको कंप्लेनेंट को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है? सो वेयर द पब्लिक सर्वेंट इज फाइलिंग द कंप्लेंट, देयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड, और वेयर द मैजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस अंडर सेक्शन 192। तो कभी कभी क्या होता है कि आपने कंप्लेंट फाइल किया मैजिस्ट्रेट के सामने, मैजिस्ट्रेट ने एग्जामिनेशन कर दिया, एग्जामिनेशन करने के बाद मैजिस्ट्रेट ने केस किसी और मैजिस्ट्रेट को मार्क कर दिया 192 के अंदर, 192 के अंदर। तो जब सब्सिक्वेंट मैजिस्ट्रेट के पास केस गया तो उनको री एग्जामिनेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज अमेंडमेंट इन कंप्लेंट। क्या किसी, एक बार आपने अगर कंप्लेंट फाइल कर दिया सेक्शन 200 के अंदर, क्या उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है? द आंसर इज यस, यू कैन गो फॉर दैट। द केस इज देयर, दैट इज एस आर सुकुमार वर्सेस एस सुनाद रघुराम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, डीजीएस में आया भी था एक बार कि कौन से केस में कोर्ट ने कहा है कि देयर कैन बी द अमेंडमेंट इन द कंप्लेंट, सो इट इज दिस पर्टिकुलर केस। दूसरा, ये दो केसेस मैंने आपके रेफरेंस के लिए रखे हैं कि कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट कोर्ट कैसे लेता है। सो गोपाल सिंह सिंधी वर्सेस स्टेट ऑफ असम का एक जजमेंट था जिसमें कोर्ट ने बताया कि हाउ टू टेक द कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट। एंड थर्ड वन इज
What is the second complaint? तो second complaint क्या आ सकती है या नहीं? So yes, if the facts are changed, circumstances are changed, तो आप ला सकते हो. लेकिन same facts पे अगर एक बार आपका complaint dismiss हो चुका है तो दोबारा से नया complaint नहीं आता है, नहीं आता है. ठीक है. इसके साथ आपका सेक्शन नंबर 202 पे आओ, पोस्टपोनमेंट ऑफ द इशू ऑफ प्रोसेस को लेके, कि क्या कोर्ट डायरेक्टली जब आपने कंप्लेंट फाइल किया तो क्या कोर्ट डायरेक्टली कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा या कोर्ट प्रोसेस सर्विंग के लिए समन वारंट इशू करने के लिए टाइम लगाएगा. तो अगर कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर एग्जामिनेशन under 200, the court may postpone the process serving and the court may go for the inquiry or the court may go for the investigations to be ordered. ठीक है. तो या तो कोर्ट इंक्वायरी करवा लेगा, ठीक है, the court may go for the inquiry or the court may go for the investigation. Either the court can inquire or the court can go for investigation. लेकिन किस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, यहां से सवाल बहुत बार आता है, बहुत बार आता है. और क्या सवाल आता है? अंडर विच इन विच केस द कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन. सो इफ द केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस, मैजिस्ट्रेट हैज नो कॉम्पिटेंसी टू ऑर्डर पुलिस इन्वेस्टिगेशन. नहीं कर सकते आप. ठीक है. नंबर 2, if you want to order the investigation, then it is the duty of the magistrate to examine the complainant as well as the witnesses on oath under section 200. Only then the investigation will be ordered, otherwise not. But where the complaint has not been made by the court, so if the complaint has been made by the court, तो वहां पे आपको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं होती है, वहां पे इंक्वायरीज ही चलती हैं. सिर्फ अगर प्राइवेट कंप्लेंट्स हैं, आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करना है, तो पहले आप कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देंगे. यूजुअली जो क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में वो इस पॉइंट से आता है कि क्या अगर मैजिस्ट्रेट के द्वारा केस ट्रायबल है, if the case is exclusively triable by magistrate, can the magistrate or case is exclusively triable by court of sessions, can the magistrate order investigation? The answer is no, नहीं कर सकते. ठीक है. इसके साथ आपका सेक्शन 203, that if the court is not satisfied after the examination conducted or after the result of inquiry or investigation, the court is of the view that the complaint is to be dismissed, the court can go for that. डायरेक्ट डिसमिसल नहीं होता है. आप अगर आपको लगता है कि अभी सेक्शन 200 के अंदर आपने एग्जामिनेशन किया, मैं आपको बताता हूँ कैसे हम चलते हैं इसमें. सेक्शन 200 के अंदर आप एग्जामिनेशन करते हो, या तो अगर आप सेटिस्फाइड है कंप्लेनेंट के एग्जामिनेशन से, सो यू विल बी इशूइंग द प्रोसेस. इशू ऑफ प्रोसेस सीधा 204 में हो जाएगा. और अगर आपको लगता है कि हमें कंप्लेंट को डिसमिस करना है, तो डायरेक्ट डिसमिसल आप नहीं करेंगे. यू विल नॉट गो फॉर द डायरेक्ट डिसमिसल, रेदर यू विल गो फॉर फर्स्टली अंडर सेक्शन 202, देन यू विल बी गोइंग अंडर सेक्शन नंबर 203 if you are not satisfied with the complaint, and if you are satisfied you will go under section number 204 of the CRPC for issuing of the process. तो 203 का रास्ता 202 से होके गुजरता है, इसका आपको ध्यान रखना है. ठीक है. कि अगर आपको डिसमिसल करना है तो डायरेक्ट डिसमिसल नहीं होगा, मतलब 200 से सीधा 203 पे जंप नहीं मार सकते, 202 बीच में आएगा ही आएगा. ठीक है. तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है. इसके बाद 204 that talks about commencement of the proceedings before magistrate. इसमें तो बेसिक चीजें हैं अब आपके कि समन केसेस में यू विल बी इशूइंग द समन्स, वारंट केसेस में यू मे इशू वारंट, और अगर आपको लगता है समन भेज के काम चल जाएगा तो वो भी कर सकते हो. सेक्शन नंबर 87 मैंने कल भी आपको बताया था. यू कैन सी ओवर हियर आल्सो that nothing in this section shall be deemed to affect the provisions of section number 87 of the CRPC. ठीक है. इसके साथ जब तक आप प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की लिस्ट नहीं दे दोगे, कोई समन वारंट कोर्ट से जारी नहीं किया जाएगा एक्यूज के अगेंस्ट. ठीक है. नो समन और वारंट शैल बी इशूड अगेंस्ट द एक्यूज्ड until the prosecution witnesses list has been given by the prosecutor in the court of law. और अगर आप नहीं देते हो तो कोर्ट आगे काम नहीं करता. बड़ा बेसिक सी चीज है. Now just see what is the rest area of discussion. अब इसमें बहुत ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा बिकॉज जो मेन कोर एरिया था उसके डिस्कशन हम कर चुके हैं. अब मैं आपको whatever is important with respect to your exams that I will be telling you. Section 205 के अंदर if the magistrate is of the view that during the inquiry the person is not required to appear before the court, उसको exemption मिल जाता है. दो provisions है exemption के 205 as well as 317 of the CRPC. If the court is of the view that the person is not required to appear before the court of law or he may linger on the proceedings, he will disturb the proceedings, then the court may go for the exemption to such person. 206 आप मार्क कर लेना. With respect to the petty offenses, कोई भी offense जिसमें सिर्फ punishment fine की है, that is
ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1000, तो उसको हम पेटी ऑफेंस मानते हैं। ऐसे ऑफेंसेस में इफ द पर्सन इज टू बी समन, तो समन में लिख दिया जाएगा दैट यू हैव बीन समन, there is a case offense against you for which the maximum punishment is fine, that is 1000. If you want to go for the, if you want to plead guilty, so you may deposit the 1000 rupees fine either personally or you can send it to the court, so we are going to convict you directly। ठीक है, तो 1000 के जुर्माने की बात है, आप पैसा भेज दो तो कोर्ट मान लेगा आपका कन्विक्शन हो गया। लेकिन पेटी ऑफेंस में कोई भी वो ऑफेंस नहीं आएगा जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आता हो। पेटी ऑफेंसेस मींस ऑफेंसेस पनिशेबल विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 बट नॉट इंक्लूडिंग द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। इसके बाद 207 है, दैट टॉक्स अबाउट कि जैसे ही पुलिस रिपोर्ट सबमिट होता है, the moment the police report is submitted in the court of law, magistrate is duty bound to hand over all the documents to the accused under 207। पुलिस रिपोर्ट मतलब 173 की जो आपकी चार्जशीट है वो दी जाएगी, 154 की एफआईआर की कॉपी दी जाएगी, 161 के सारे बयान दिए जाएंगे, 164 के बयान अगर कोई दर्ज हुए हैं वो भी दिए जाएंगे। सो एवरीथिंग विल बी हैंडेड ओवर टू द कंसर्न्ड एक्यूज्ड पर्सन, ताकि वो अपना अच्छे से डिफेंस तैयार कर ले। अगर ये कंप्लेंट केस है, सो कंप्लेंट केस में सेक्शन नंबर 208 फॉलो किया जाता है, एंड द कॉपी ऑफ द कंप्लेंट, एग्जामिनेशन, व्हाटएवर इज डन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एवरीथिंग इज टू बी फॉरवर्डेड टू द एक्यूज्ड पर्सन। 209 में कमिटल की बात है कि whenever the case is exclusively triable by the court of session, the magistrate is committing the case, so committal is done under section number 209 of the CRPC। पूरा का पूरा केस मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से चला जाएगा कोर्ट ऑफ सेशंस में। कॉग्निजेंस हमेशा मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लेंगे। कॉग्निजेंस लेने के बाद इंक्वायरी विल आल्सो बी टेकन अप बाय द मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, बट after that, if the case is triable by magistrate, then he will be framing the charges, and if the case is triable exclusively by the court of session, then the case will be committed to the court of session, and the court of session committal is done under 209 of the CRPC। इसके बाद 210 का आपको ध्यान रखना है। 210 से एक सवाल आता है कि कभी कभी एक केस में कंप्लेंट भी आ गया और पुलिस वालों ने पुलिस रिपोर्ट भी फाइल कर दिया। In one case there is a police report as well as the complaint, what the court will do, court is going to merge both the things। अगर सेम accused सेम इवेंट है, मर्ज करेंगे और केस चलेगा जैसा ये पूरा केस पुलिस रिपोर्ट पे ही आया हो। लिखा हुआ है क्लॉज नंबर 2 के अंदर, that if a report is made by the investigating police officer under 173 and on such report the cognizance is taken against any person against whom there is a complaint case also, the magistrate shall inquire into or try to gather the complaint case and the case arising from a police report as if both the cases were instituted on the पुलिस रिपोर्ट। ठीक है जी, इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर कंप्लेंट केस भी था और पुलिस वालों ने चार्जशीट भी कोर्ट में दे दी और कोर्ट ने उस पर भी कॉग्निजेंस ले लिया, दोनों को मर्ज कर देंगे और मर्जर होने के बाद जो केस चलेगा वो चलेगा पुलिस रिपोर्ट का केस जैसे चलता है वैसे। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑन दिस पॉइंट, दैट इज हरजिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1985 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड नाउ। Yes, so इसके बाद the next area is chapter number 17, that is talking about the content of the charge। चार्ज के अंदर क्या क्या लिखा जाएगा as it is written in 211, that is you will be mentioning the name of the section, लॉ का नाम लिखा जाएगा। अगर कोई नाम उस पर्टिकुलर ऑफेंस को नहीं दिया गया है, you will be mentioning the definition of that particular offense। लॉ एंड सेक्शन नंबरिंग आपको देनी पड़ती है। चार्ज shall be written in the language of the court, so these are the very important things that you have to understand। and अगर previous conviction के basis पे you are liable for the enhanced punishment, then उसका एक specific charge अलग से create होता है। but 211 clause number 7 is to be taken up with some other provisions of the CRPC, that is whenever the judgment is passed and after that the sentence order is required to be passed। तो judgment pass होने के बाद और sentence order होने से पहले previous conviction का charge जो है वो frame किया जा सकता है। so that is altogether a different thing, that how you are going to frame this charge। ये मैं अभी आपको अपने अगले सेक्शन में बताऊंगा कि कैसे वो बनेगा। चलिए, इसके बाद ये जो इलस्ट्रेशंस है, ये इलस्ट्रेशंस का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से काफी बार सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो विच आई हैड मार्क्ड ओवर हियर ना, ये इलस्ट्रेशंस का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, व्हाटएवर द इलस्ट्रेशंस इन 211, 12, 13, ये मैं 213 का एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा चीजों को समझने में। देखो कि क्या ऑफेंस कैसे व्यक्ति ने किया, ये चार्ज में लिखना जरूरी है या नहीं। दैट हाउ द पर्सन हैड कमिटेड द ऑफेंस, डू इज इट इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड व्हाइल फ्रेमिंग द चार्जेस। सो द आंसर इज
that if the actus reus can be different for doing that particular offense, तो आपको बताना पड़ता है कि कैसे किस एक्टस रियस से आपने ऑफेंस किया। लेकिन अगर एक्टस रियस अलग अलग नहीं हो सकते तो फिर आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं आई विल बी गिविंग एन एग्जांपल, लाइक फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन मर्डर्स द अदर, तो मर्डर करने के लिए एक्टस रियस किया है, दैट यू आर मर्डरिंग समवन। मेंजरिया अलग हो सकता है, लेकिन एक्टस रियस तो किलिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग है ना, तो यहां पे आपको मैनर नहीं लिखना कि कैसे मारा गया, वो ट्रायल की बात है। बट whenever a person is being cheated, तो चीटिंग करने के अलग अलग एक्टस रियस हो सकते हैं, तो आपको बताना पड़ता है कि चीटिंग की कैसे की, है ना। तो एज इट इज रिटन दैट if accused is of a theft, so theft तो you are with the dishonest intention, you are removing the property, so आपको चार्ज में लिखने की जरूरत नहीं है कि चोरी कैसे की। बट when it is cheating, so cheating के केस में it is required to set out the manner in which the cheating has been done, so it is a very important thing। मैंने आपको तरीका बता दिया है आइडेंटिफाई करने का कि अगर ऑफेंस करने का एक्टस रियस एक ही है, जैसे थेफ्ट करने का एक्टस रियस एक ही है, मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी, मर्डर का एक्टस रियस एक ही है, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो यहाँ पे आपको मैनर नहीं लिखना होता, ठीक है। लेकिन जिस ऑफेंस को करने के तरीके अलग अलग हैं, जैसे चीटिंग अलग अलग तरीके से होती है, तो आपको मैनर लिखना पड़ता है कि चीटिंग कैसे की गई। दैट इज द ओनली टेस्ट दैट यू हैव टू सी। सेक्शन नंबर 215 में आ जाओ, दैट इफ देयर इज एनी एरर और ओमिशन इन द चार्ज फ्रेमिंग, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ दैट। इट इज रिटन दैट एनी एरर और ओमिशन इज इममटेरियल, इममटेरियल, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी गलती का। लेकिन इफ बिकॉज ऑफ द एरर और irregularity or omission there is a failure of justice, then definitely it will have some impact. Section number 464 of the CRPC is to be correlated with this particular provision, that is section number 215 of the CRPC। बताया जाता है कि अगर एरर ओमिशन आपसे हो गया है चार्ज फ्रेमिंग में, तो उसको सुधारा कैसे जा सकता है, what is the basic meaning of failure of the justice। Now apart from this section number 216 सवाल आता है that at what stage the court can alter the charges। तो आंसर is court can alter the charges at any time before the judgment is pronounced। एक बार अगर चार्जेस में ऑल्टरेशन हुई है तो you have to read and explain the charges whatever are being altered or added to the accused person। 217 में चलता है, and it is saying that whenever the charges are altered, the parties are competent enough to recall, re-summon and re-examine their witnesses who are already examined। और अगर किसी नए विटनेस को भी बुलाना है to call any further witness in the court of law, and that new witness can be एग्जामिन्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको समझ के रखना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू द जॉइंडर ऑफ चार्जेस, जनरली व्हाट हैपेंस दैट एज मेनी सेक्शंस आर देयर, सेक्शन 218 इज सेइंग एज मेनी ऑफेंसेस, एज मेनी ट्रायल्स कैन बी देयर। As in clause number 1 it is mentioned, for every distinct offense, for every person accused, there shall be a separate charge and every charge shall be tried separately। But there is an exception to this, there is a saving clause in 218 itself, that is 219, 20, 21, 23। You people tell me that if a person has committed offenses of a same kind within 1 year, तो कितने offenses को आप जोड़ सकते हो एक ट्रायल में? How many offenses you can join in one trial? It is given in section number 219। आप लोगों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं आए, just mention it। How many offenses you can join? That is 3 maximum, 3 अपराधों को आप एक साथ जोड़ सकते हो अगर वो सेम तरीके के हैं, सेम काइंड के हैं और 1 साल के अंदर अंदर किए गए हैं, ठीक है। नाउ इसके साथ आपको 220 में क्या आपको रखना है ध्यान में, आई विल बी टेलिंग यू दैट यू जस्ट फोकस ऑन द इलस्ट्रेशंस पार्ट। इलस्ट्रेशंस विल बी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 220 एंड इलस्ट्रेशन से ही जनरली सवाल आ जाता है, ठीक है, कि अगर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस में मल्टीपल ऑफेंसेस हैव बीन डन तो यू कैन जॉइन ऑल द ऑफेंसेस, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद 221 में इफ इट इज डाउटफुल दैट व्हिच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो जो भी आपको डाउटफुल ऑफेंसेस लगते हैं सभी का चार्ज बना दो, जो प्रूव होगा वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। दैट वी डोंट नो, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर ए अगर आप इसका देखें, दैट ए इज एक्यूज्ड दैट ही माइट हैव कमिटेड थेफ्ट, स्टोलन प्रॉपर्टी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग। हमें नहीं पता भैया इसने क्या किया, तो जो आपको लगता है सारे चार्ज बना दो, वो ट्रायल में देख लेंगे, जो प्रूव होगा ठीक है, जो नहीं प्रूव होगा उसको हम विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो 224 के अंदर 224 के अंदर हम जो है विड्रॉल ऑफ द चार्जेस का कॉन्सेप्ट रखते हैं। फिर इसके बाद 223 दैट इज टॉकिंग अबाउट द
the situation where more than one person can be tried jointly. So एक से ज्यादा लोगों ने अगर अपराध किया, you can try these person. joinder of persons की बात है 223 के अंदर, joinder of persons. ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर. 224 में विड्रॉल ऑफ द चार्जेस है कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस बनाए गए थे, कुछ एक के अंदर कन्विक्शन हो गया, कुछ एक के अंदर कन्विक्शन नहीं हुआ, तो रिमेनिंग ऑफ द चार्जेस द कोर्ट में ऑन इट्स ओन अकॉर्ड में स्टे, और द कोर्ट में अलाउ द पार्टी फॉर द विड्रॉल ऑफ द चार्ज. तो या तो कोर्ट खुद ही रोक देगा या फिर कोर्ट जो है उस पर स्टे लगा देगा. ठीक है, चलिए. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ दिस. इसके बाद देखो, अब इसमें ट्रायल्स की बातें आ गई. अब ट्रायल्स में चैप्टर नंबर 17 है. यूजुअली आपको यही पूछा जाता है दैट अंडर विच प्रोविजन द कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल इज देयर. तो वो आपको 225 से 237 तक का एरिया जो है वो पता होना चाहिए. ठीक है, 225 टिल 237. ये अब आपका होमवर्क वाला काम है. ठीक है, कि चार्जेस एक बार आपने समझ लिए 224 तक. उसके बाद ट्रायल कहां कहां चलेगा, दैट इज ओनली द बेसिक थिंग. दैट 225 टिल 237 इट इज टॉकिंग अबाउट द कोर्ट ऑफ सेशंस ट्रायल. स्टेजेस का आपको ध्यान, अभी प्रीलिम्स में यहां से सवाल ज्यादा नहीं आते, मेंस में ज्यादा सवाल यहां से आते हैं. इट इज रेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट हाउ द चार्जेस आर टू बी फ्रेम्ड एंड द अदर थिंग्स आर देयर बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशंस. तो अगर आप जर्नल मार्जिनल हेडिंग्स भी देखें, सो ओपनिंग विल बी डन बाय द प्रोसिक्यूशन. देन इफ द चार्जेस आर फ्रेम्ड, गुड इनफ. इफ देयर इज नो चार्जेस फ्रेम्ड, डिस्चार्ज विल बी देयर. Then plea of guilt will be there. If the conviction is there, you can go for that. If the person does not go for the plea of guilty, then dates will be fixed for evidence of prosecution. If the prosecution discharges their burden, then good enough. If they does not discharges their burden, they are not able to prove the things, then acquittal will be there. If they discharges the burden will shift over to the opposite party. Defense will come in the court of law. Defense will be giving the their evidences, then arguments, and then the judgment and conviction. And that is where I was talking about 211 clause number 7 की previous conviction का अगर चार्ज बनाना है तो 236 के साथ ही प्रोविजंस काम करते हैं. जैसे जजमेंट सुनाई जाएगी उसके बाद आप कोर्ट को बताते हैं कि सर दिस पर्सन वाज प्रीवियसली कन्विक्टेड एंड ही इज लायबल फॉर द एनहांस्ड पनिशमेंट, एंड देयर आफ्टर अनदर चार्ज विल बी फ्रेम्ड विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस कन्विक्शन. फिर उसको ज्यादा सजा जो एनहांस्ड पनिशमेंट है दैट वी कैन गिव. इसके साथ आपका नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 19 दैट टॉक्स अबाउट द ट्रायल ऑफ द वारंट केसेस बाय द मैजिस्ट्रेट. प्रोसेस लगभग सिमिलर रहता है. ठीक है, ये सिर्फ इसमें अब हमारा यहाँ पे रैपिड रिवीजन राउंड में तो कुछ इसमें करने वाला है नहीं खास. ये सिर्फ आपकी रीडिंग के लिए कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है ट्रायल्स के दौरान. मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली क्वेश्चन कम्स, बट अभी तो आपका प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स की तैयारी कैसे तैयारी आपको करनी पड़ेगी. ठीक है जी. तो इसमें अब आप सिर्फ सेक्शंस का ध्यान रखेंगे. बस कभी कभी ये सवाल पूछ लेते हैं दैट अंडर विच प्रोविजन द कन्विक्शन और एक्विटल इज डन. तो कन्विक्शन और एक्विटल के लिए 247 का आपको ध्यान रखना है. बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेंस के लिए रेलेवेंट चीजें हैं. ठीक है ना. इसमें नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ये अगेन ऑर्डर नंबर 20 चैप्टर नंबर 20 दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द समन्स केस. समन्स केस में एक जो सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि क्या इज इट रिक्वायर्ड इन द समन्स केस टू फ्रेम द फॉर्मल चार्जेस. द आंसर इज नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फ्रेम द फॉर्मल चार्ज. ठीक है, फॉर्मल चार्ज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है. ठीक है, इन द समन्स केसेस विदाउट इवन फ्रेमिंग द चार्जेस यू विल पुट अप द मैटर फॉर कंसिडरेशन एंड यू विल बी प्रोसीडिंग फर्दर. यू विल बी टेकिंग अप द नेक्स्ट स्टेप दैट इज ऑफ प्ली ऑफ गिल्ट. इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फ्रेम द फॉर्मल चार्जेस. ठीक है, बाकी स्टेप्स तो वैसे ही हैं. देखो, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, डिफेंस एविडेंस, देन आर्गुमेंट्स एंड देन जजमेंट, वो सब सेम है. नाउ आई विल बी टेलिंग यू पीपल कि आपको कौन से सेक्शंस को थोड़ा सा ध्यान से एक बार आप टेकअप कर लेना जब आप अपनी सेल्फ स्टडीज भी करेंगे. कुछ एक ऐसे सेक्शंस हैं जिनसे लगभग ऑफ बीट एरिया है, लेकिन यस यू माइट बी गेटिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट एरिया आल्सो. वन यू पीपल मार्क दैट इज सेक्शन नंबर 256. 256 को मार्क करो अपने पेरेक्ट्स पे. दैट इज विड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट. ठीक है, 256 को मार्क कर लो. सॉरी, ये आपके इसमें गड़बड़ है कुछ मेरे ख्याल से. 256 में नॉन अपीयरेंस है ना. Just give me 1 second. हाँ, ये है 256. थोड़ा सेक्शंस में आगे पीछे कर दिया इन्होंने. ठीक है, 256 that is non-appearance or death of the complainant. This provision is to be taken up कि अगर complainant कोर्ट में नहीं आता है या उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो ऐसे केस में what the option the court is having, that you people just see.
that the court may go for the acquittal of the accused. या तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को एडजर्न कर देगा, और अगर नहीं करता है क्योंकि कंप्लेनेंट खुद ही अगर नहीं आ रहा कोर्ट में, तो हम क्या करें? ठीक है, हम एक्विटल कर सकते हैं एक्यूज्ड का। एक तो इस चीज का ध्यान रखना है। 257 में, 256 में सॉरी ना, फिर आपका 257 में आता है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। तो इफ यू वांट टू गेट योर कंप्लेंट टू बी विड्रॉन, यू कैन गो फॉर दैट, एंड वंस द कंप्लेंट इज विड्रॉन, इट विल बी डीम्ड एज इफ द एक्यूज्ड इज एक्विटेड। यहाँ पे मार्क करके स्टार लगाओ, ठीक है। और इसमें आपका इसका जो है नेक्स्ट सेक्शन दैट इज 258, ठीक है। ये सेक्शंस में मैंने इसको रेक्टिफाई कर दिया। 257 विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट के लिए, इफ यू विड्रॉ योर कंप्लेंट, देन the acquittal of the accused will be considered. Okay, if you want to stop the proceedings, if the proceedings are initiated, summons case is there, and the proceedings are required to be stopped, the magistrate has the competency to record the reasons, and that they can go for the stopping of the proceedings without pronouncing any judgment. अब ये है कि अगर proceedings को रोक दिया गया, what will be the impact? It will be considered as if the judgment is of acquittal and the court is going to release the accused person. एक सवाल आता है कि क्या समन्स केस को वारंट केस में कन्वर्ट किया जा सकता है? आंसर इज यस, इट कैन बी कन्वर्टेड एज पर सेक्शन नंबर 259 ऑफ द सीआरपीसी, प्रोवाइडेड, एक चीज का ध्यान रखना है, इफ द ऑफेंस is with the punishable with the imprisonment exceeding 6 months। अगर 6 महीने से ज्यादा की सजा है और आपको लगता है कि ये समन्स केस को वारंट केस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, यू मे गो फॉर दैट, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 21 दैट टॉक्स अबाउट समरी ट्रायल्स। समरी ट्रायल किसके पास चलेगा? ये यहां से सवाल आ जाता है। इट मे बी ट्राइड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो इनके पास कॉम्पिटेंसी है। कौन से केसेस समरी ट्रायल में आते हैं? It is mentioned over here that offenses which are not punishable with death, imprisonment for life or exceeding 2 years। तो वारंट केसेस जो हैं उनमें आप समरी ट्रायल नहीं चला सकते, सिर्फ समन्स केसेस में समरी ट्रायल जो है वो चलाया जा सकता है, ठीक है, वो चलाया जा सकता है। सो दिस इज द बेसिक थिंग यू पीपल हैव टू सी। इसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस है जैसे थेफ्ट एटसेट्रा, तो उसमें हो सकता है प्रोवाइडेड जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 2000 रुपए से कम की होनी चाहिए। सेकेंड क्लास के मजिस्ट्रेट क्या समरी ट्रायल चला सकते हैं या नहीं? It is mentioned in 261 that High Court may confer the magistrate invested with the power of magistrate of second class to go for the summary trial also, provided जो ऑफेंस की पनिशमेंट है वो 6 महीने से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर कभी भी समरी ट्रायल चलेगा, 262 कहता है कि पनिशमेंट कितनी होगी? दैट विल बी टू द मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स। समरी ट्रायल के अंदर मैक्सिमम सजा 3 महीने की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। मेक अ स्टार ओवर दिस, ठीक है। इसके बाद आपका जो एग्जाम में सवाल आ सकता है दैट इज 264 के अंदर, अगर समरी ट्रायल है तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि जजमेंट कौन से सेक्शन के अंदर मेंशन है, तो 264 का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग कौन से केसेस में होती है और कौन से में नहीं होती है, यहां से सवाल आता है। तो प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन में, और जो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स है उनके अगेंस्ट नहीं काम करता, बाकियों के अगेंस्ट वो काम कर सकता है ये चैप्टर। या फिर कोई भी ऑफेंस जिसकी सजा 7 ईयर से ज्यादा की है, ठीक है। इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स, ठीक है, तो वहां पे वेदर प्ली बार्गेनिंग चैप्टर विल बी एप्लीकेबल और नॉट, 265 कैपिटल इसका जवाब दे रहा है। इफ यू सी that this chapter shall apply to the accused against whom the report has been forwarded, alleging therein that offense to which has been committed other than the offense which is punishable with a term exceeding 7 years। तो 7 साल से ज्यादा का अगर कोई ऑफेंस है उसमें प्ली बार्गेनिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन लेस देन 7 years वाला है तो उसमें वी कैन गो फॉर द प्ली बार्गेनिंग ऑल्सो। अब प्ली बार्गेनिंग जब भी आप करोगे तो यू हैव टू मेक अप एन एप्लीकेशन इन द कोड। यू विल बी मेंशनिंग इन द एप्लीकेशन दैट आई एम मूविंग दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन वॉलेंटरली, ठीक है, अपनी मर्जी से आप ये एप्लीकेशन कोर्ट के सामने लगा रहे हैं। यू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट व्हिच कैन बी गिवन। इसके बाद म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के अंदर पार्टीज को नोटिस दिया जाता है। देयर आफ्टर पार्टीज विल सिट, अगर पुलिस रिपोर्ट का केस है तो एक्यूज्ड को, विक्टिम को, आईओ को और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, चारों को मीटिंग में बिठाया जाएगा। मीटिंग में बिठाने के बाद दे विल मेक अप, द मजिस्ट्रेट विल बी हैविंग द पोजीशन एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ओवर देयर, और उसके बाद जो है इसको हम क्लोज कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद अगर केस आपका डिस्पोज हो जाता है देन व्हाट विल बी द लेवल ऑफ एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट। तो इसमें आप क्लॉज नंबर सी और क्लॉज नंबर डी मार्क करेंगे सिर्फ एग्जाम्स के लिए। प्रीलिम्स में यहां से सवाल आ जाता है कि अगर किसी ऑफेंस की मिनिमम सजा फिक्स्ड है, मिनिमम फिक्स्ड है, जैसे नॉट लेस देन 7 years, नॉट लेस देन 10 years, तो मिनिमम का 1/2 कर देंगे। और अगर मिनिमम फिक्स नहीं है तो जो भी मैक्सिमम ऑफ ऑफेंस की पनिशमेंट है उसका 1/4 आप करते हो। तो दैट इज द क्राइटेरिया इफ द पनिशमेंट इज देयर इन द प्ली बार्गेनिंग। सवाल उठता है कि अगर प्ली बार्गेनिंग के अंदर कोर्ट ने कोई चीज डिसाइड की है तो कैन यू गो फॉर एन अपील। द आंसर इज नो, अपील कैन नॉट बी देयर बिकॉज एस्टॉपल की डॉक्ट्राइन्स अप्लाई होती हैं। अपील कैन नॉट बी प्रेफर्ड अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ द against where the judgment is under the plea bargaining chapter। इसके साथ साथ आपका 265L आप मार्क कर लो। 265L की जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर कोई भी अगर ऑफेंस हुआ है तो वहां पे प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर की एप्लीकेशन नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। इसके बाद आपका रैंडम एरिया है बीच में बहुत सारा, ठीक है, मैं उसमें आपको जो जो रेलेवेंट चीजें वो मैं मार्क करवा रहा हूँ। अपने अपने बेरिक्स पे आप फोकस करेंगे। 267 के अंदर प्रोडक्शन वारंट्स का कॉन्सेप्ट है। 267 के अंदर इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन वारंट कि अगर कोई भी व्यक्ति जेल में होता है, ठीक है, जेल में है और जेल से उसको कोर्ट में बुलाना है, जैसे एक व्यक्ति अलग अलग अपराधों के अंदर जेल में है, उसको जेल से बुलाना है, तो आप कैसे इशू कर बुलाते हो? तो प्रोडक्शन वारंट का कॉन्सेप्ट 267 के अंदर है। इसको स्टार लगा के आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें आपका 272 में आओ, जस्ट कम टू सेक्शन 272। लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट से सवाल आता है कि कोर्ट की लैंग्वेज क्या होती है। तो इट इज मेंशन द स्टेट गवर्नमेंट मे डिटरमाइन फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोर्ट द लैंग्वेज ऑफ ईच कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट। क्योंकि हाई कोर्ट की लैंग्वेज हाई कोर्ट खुद बताता है, इंग्लिश ही है बेसिकली, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का लैंग्वेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बताएगा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की लैंग्वेज क्या रहेगी, ठीक है। इसके साथ साथ पीपल मार्क सेक्शन नंबर 280 डिमेनियर ऑफ द विटनेस की बात है। जब भी कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं तो मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट प्रिजाइडिंग जज जो भी हैं दे मस्ट रिकॉर्ड द रिमार्क्स ऑन द डिमेनियर ऑफ द विटनेस। इट इज आल्सो गुड टू रिकॉर्ड इट, ठीक है। इसके बाद आपका आप मार्क करेंगे सेक्शन नंबर 291 मार्क करो, ठीक है। 291 डिपोजिशन ऑफ द मेडिकल विटनेसेस है। कभी भी अगर किसी केस में मेडिकल विटनेस ने कोई स्टेटमेंट लिख के दे दिया है तो उसका स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस काफी सफिशिएंट है चीजों को प्रूव करने के लिए। लेकिन इफ यू वांट टू कॉल अप दैट मेडिकल विटनेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ यू कैन कॉल दैट पर्सन आल्सो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ 291 कैपिटल है, ये आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट्स की बात है। जब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं तो उनको कोर्ट में कैसे प्रूव करवाना है टीआईपीस को लेके, ठीक है। तो आप जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनकी रिपोर्ट कोर्ट में मान्य है, बट इफ यू वांट टू कॉल दैट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन द कोर्ट ऑफ लॉ यू हैव द कॉम्पिटेंसी टू कॉल दैट पर्सन, ठीक है। इसको स्टार लगा के इसको ये वाले जो प्रोविजंस में मार्क करवा रहा हूँ इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ के पहले जाना पड़ेगा, उससे जल्दबाजी मत करना क्योंकि बेरेक्ट में ये एरिया इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप आएंगे सेक्शन नंबर 299 में। कैन द स्टेटमेंट of witnesses be recorded in the absence of the accused person? जनरली एक रूल है सेक्शन नंबर 273 के अंदर कि जो भी विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी whenever the statement of the witness is to be recorded it must be recorded in the presence of the accused। but अगर accused absconded है या unknown है तो ऐसी सिचुएशंस में मैजिस्ट्रेट जो है एक्यूज की गैर मौजूदगी में भी विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर कल को एक्यूज्ड मिल जाता है, इफ द एक्यूज्ड इज सब्सिक्वेंटली अरेस्टेड, तो हम उस विटनेस को दोबारा से बुला के इसका बयान कोर्ट में दर्ज करेंगे। लेकिन अगर वो विटनेस सब्सिक्वेंटली अवेलेबल नहीं है तो जो पहले उसका बयान दर्ज हुआ था 299 के अंदर उसी बयान को उसका फाइनल स्टेटमेंट मान के हम आगे चला सकते हैं। और इसमें एक जजमेंट है आत्माराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का 2019 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये आपको रेलेवेंट एरिया है। सेक्शन 300 रूल ऑफ डबल जियोपार्ड है। वंस द पर्सन इज कन्विक्टेड और एक्विटेड फॉर एन ऑफेंस ही कैन नॉट बी ट्राइड अगेन। बट इसका क्लॉज नंबर 3 आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी व्यक्ति का कन्विक्शन हुआ किसी ऑफेंस के लिए लेकिन बाद में कॉन्सिक्वेंसेस एक्ट के बदल गए और जो पहले नहीं पता थे तो सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए अलग से ट्रायल चल सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर बी, कि एक व्यक्ति के ऊपर ग्रीवियस एक्ट का केस चला, कन्विक्शन हुआ, आफ्टर दैट द पर्सन डाइज, ही मे बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड आफ्टर दैट, ठीक है। तो चल सकता है क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंस जो
डेथ वाला था, ये पहले नहीं पता था। एग्जाम में सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं, एक तो ये 300 का क्लॉज नंबर 3 रूल ऑफ डबल जियोपार्डी ये पूछ लेते हैं। ऑट्रेफॉइस एक्विट ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट का जो आपका डॉक्ट्राइन है, इट इज ऑट्रेफॉइस एक्विट ऑट्रेफॉइस कन्वेक्ट। ठीक है, एक बार अगर किसी व्यक्ति का एक्विटल या कन्विक्शन हो चुका है, दोबारा से उसका कन्विक्शन एक्विटल उसी चीज पे नहीं देखा जा सकता। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें हैं। नंबर 1 कि अगर किसी व्यक्ति का 258 के अंदर डिस्चार्ज हुआ है, he shall not be tried again for the same offense। तो 258 के अंदर अगर किसी व्यक्ति को आपने डिस्चार्ज कर दिया, उसका ट्रायल दोबारा से नहीं चल सकता एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट ने कंसेंट दे दिया तो यू कैन गो फॉर दैट, क्योंकि डिस्चार्ज अलग चीज होती है, एक्विटल अलग चीज होती है। डिस्चार्ज और एक्विटल एक जैसी चीजें नहीं है। तो ये लिखा हुआ है डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट, डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड इज नॉट एन एक्विटल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन। ये मार्क कर लो। और सवाल आता है कि क्या डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट एक्विटल होता है, द आंसर इज नो। क्या डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड एक्विटल होता है, द आंसर इज नो। अगर 258 के अंदर डिस्चार्ज हुए किसी व्यक्ति का, क्या दोबारा से ट्रायल चल सकता है? वैसे तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर कोर्ट कंसेंट दे दे तो यू कैन गो फॉर दैट, यू कैन गो फॉर दैट। एंड दो जगह सेविंग क्लॉज है, दैट इज सेक्शन नंबर 26 ऑफ जेसीसी, दैट इज जनरल क्लॉजेस एक्ट, एंड 188 ऑफ द सीआरपीसी। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस में है आपके एरिया। इलस्ट्रेशंस को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप मार्क करेंगे सेक्शन नंबर 303, 303, 304, दैट इज लीगल एड को लेके जो प्रोविजंस हैं कि फ्री लीगल एड, अगर कोई व्यक्ति अपना खर्चा नहीं उठा सकता कोर्ट में कंटेस्ट केस करवाने के लिए, डिफेंस लेने के लिए, तो द लीगल एड इज गोइंग टू बी हेल्पिंग आउट सच पर्सन। इसके बाद 306, दैट इज फॉर द टेंडरिंग ऑफ पार्डन टू द एक्म्प्लिस। ठीक है, टेंडर ऑफ पार्डन टू द एक्म्प्लिस, कौन व्यक्ति पार्डन दे सकता है, किस स्टेज पे दे सकता है, ये आप यहाँ पे सीख लो बस। और कौन से केसेस में टेंडर ऑफ पार्डन दिया जाएगा ये बता देता हूँ कि देखो, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल किसी भी स्टेज पे पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास केवल इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान ही पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। तो सीजीएम की पावर इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी पार्डन ग्रांट करने की है, लेकिन जेएम 1C के पास अगर पार्डन ग्रांट करने की एप्लीकेशन आती है तो वो सिर्फ इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान ही कर सकते हैं। नंबर 2, कौन से केसेस में पार्डन ग्रांट नहीं किया जा सकता? सो कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 7 ईयर से ज्यादा की है, उसमें आप पार्डन ग्रांट कर देते हो, और जो 7 ईयर से कम के हैं उनमें पार्डन ग्रांट नहीं किया जाता। इफ द ऑफेंस इज less than 7 years, punishment is less than 7 years, then pardon will not be taken up. But if the offense is punishable with more than 7 years, more than 7 years, which may extend to 7 years or to more than 7 years, then in such cases the pardon can be granted, because serious offenses में ही हमें किसी accomplice को pardon grant करने की परमिशन सेक्शन 306 के अकॉर्डिंगली है। 307 में बताया गया है कि जो कमिटल कोर्ट होती है, जिस कोर्ट को आप कमिट करते हैं कि जो कि आपका कोर्ट ऑफ सेशंस होता है, वो कोर्ट भी ये 306 के अंदर मिलेगा आपको, सॉरी 307 के अंदर। ठीक है, कि जो कमिटल कोर्ट्स हैं वो भी पार्डन ग्रांट कर सकती हैं। देयर आफ्टर ये लिखा ना, एट एनी टाइम आफ्टर द कमिटमेंट, कमिटमेंट मींस कमिटल ऑफ द केस इज डन टू विच द कमिटमेंट इज मेड, दैट कोर्ट कैन आल्सो गो फॉर द पार्डन। 308 है कि अगर व्यक्ति जिसको पार्डन दिया गया अगर वो पार्डन को फॉलो नहीं करता है तो उसका क्या किया जाएगा? तो द सेपरेट ट्रायल विल बी देयर ऑफ दैट पर्सन, और क्योंकि उसने डायरेक्शंस को वायलेट किया है तो उसका केस अलग से उसके ऊपर चलता है। तो लेकिन इस ये जो एक्म्प्लिस था इसका ट्रायल बिल्कुल अलग चलेगा, पुराने एक्यूज के साथ इसका जॉइंट ट्रायल अब नहीं चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3010 लोकल इंस्पेक्शन को लेके हेडिंग याद रखनी है आपने, और उसमें कुछ नहीं है। 311 कि अगर किसी भी व्यक्ति को समन करना है कोर्ट ने या री एग्जामिन करवाने के लिए पार्टीज चाहती है तो कोर्ट सुमोटो भी कर देता है समनिंग, या फिर पार्टीज एप्लीकेशन लगाना चाहिए, दे कैन गो फॉर दैट। ठीक है, इसको जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए। सो आफ्टर दिस सेक्शन नंबर 313, यू पीपल मार्क इट डाउन, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज पर्सन। देखो, दो चीजें हैं। एक्यूज को किसी भी स्टेज पे कोई भी सवाल पूछना हो, द कोर्ट में आस्क एट एनी स्टेज एनी क्वेश्चन टू सच पर्सन, लेकिन एक स्टेज मैंडेटरी है जहां पे आपको उसकी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, दैट इज आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस एंड बिफोर द डिफेंस एविडेंस स्टार्ट्स। लेकिन देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट if it is a summons case and the personal appearance of the accused is dispensed, it is
If the court is of the view that 313 is also required to be dispensed, कोर्ट ऐसा कर सकता है. तो समन्स केस में अगर व्यक्ति की पर्सनल अपीयरेंस को डिस्पेंस कर रखा है तो 313 को भी डिस्पेंस किया जा सकता है. बट वारंट केसेस में आपको 313 फॉलो करना मैंडेटरी रहेगा. इट इज मैंडेटरी इन द वारंट केसेस. अपार्ट फ्रॉम दिस, ओथ एडमिनिस्टर नहीं करवाया जाएगा एक्यूज को, बिकॉज अगर ओथ एडमिनिस्टर करवा दी तो वो झूठ नहीं बोल सकता, गलत स्टेटमेंट नहीं दे सकता. और एक्यूज अगर कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे देता है तो he should not be liable for any punishment with respect to any false statement etc. तो इसका ध्यान रखना है. George is saying, sir, what is the official language of the state? That is being decided by the state legislatures. Generally, हर state का अपना domain है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं जॉर्ज, it is talking about that what should be the language of the court. तो court की language, subordinate courts की language will be decided by the state government. Okay, the language of the state will be decided by the state itself. तो वो state का domain है. चलिए, इसके बाद सेक्शन नंबर 315 is there with respect to कि क्या accused अपने आप कोई competent witness बन सकता है. Definitely he can go for that, but directly नहीं हो सकता. Accused is not directly a competent witness in the defense. He has to make up an application in the court. He will be mentioning to the court, he will request to the court in writing that I want to be a witness in my defense. ठीक है, तो अगर उसने application लगाया है, court will allow him. लेकिन अगर वो कोई भी सवाल का आंसर नहीं दे सकता तो इट शेल नॉट बी अ पॉइंट टू रेज एनी कमेंट ओवर द एक्यूज्ड पर्सन. तो ये 315 की बात है. इसमें इसके बाद आपके लिए रेलेवेंट एरिया रहेगा 319, दैट इज एडिशनल प्रोसिक्यूशन. एडिशनल प्रोसिक्यूशन के लिए 319 है. देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू, इवन 3 जजमेंट्स with respect to 319. 319 क्या है? Let me tell you people in brief that there is a case going on. By the trial or inquiry, you got to know that some other person is also an accused in this offense, and that person is not made as an accused. Yeah, earlier he was accused, but now he is not an accused. So, आप additionally अगर किसी को prosecute करना चाहें with respect to the additional prosecution of any person, the court may apply its power given under 319. Summons will be issued to such person, and the additional prosecution will be taken up. ठीक है. So there are 3 very landmark judgments on this point. Landmark judgments: Hardeep Singh versus State of Punjab, Ramesh Chand Srivastava versus State of UP 2021, and Yashodhan Singh versus State of Uttar Pradesh 2023. Important judgments. Important judgments on the point of section number 319 CRPC. कमाल हो गया आज तो. हाँ, 2.25 घंटे से लगातार बोल रहे हैं. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट एरिया ऑफ डिस्कशन, दैट इज कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस. कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस, देखो 2 चीजें हैं. वन इज दैट वेयर द कंपाउंडिंग कैन बी डन विदाउट द any permission of the court, and the other one is for compounding the consent of the court is must. Okay, so as it is referred in 320 clause number 1, the offense is punishable under the sections of IPC may be compounded by the persons, may be compounded by the person. इसके नीचे चार्ट है. तो 320 के क्लॉज नंबर 1 के अंदर जो कुछ भी है, इसमें आपको कोर्ट की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है. इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द परमिशन ऑफ द court to go for the compounding. Rather the party will themselves be ready for that and the compounding can be done. तो इसके नीचे जो चार्ट है, इसमें जो ऑफेंसेस आ रहे हैं, these person are eligible to go for the compounding. लेकिन 320 के क्लॉज नंबर 2 के अंदर, in section 320 clause number 2, the compounding will be done with the permission of the court, with permission of the court. So it is like the offenses which are in this table, the person whosoever is mentioned in the last column, that person will be making up an application that okay, I want to compound this particular offense. Compound का मतलब होता है compromise करवाना, compromise करवाना. अब यहाँ से सवाल क्या क्या बनते हैं उसको आप देखो. अगर कोई भी व्यक्ति जो विक्टिम है, जिसको कंपाउंडिंग करनी है, लेकिन वो 18 साल से कम है, तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, और ही इज एन इडियट और लुनेटिक, ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉम्प्रोमाइज. सो फॉर दैट, ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, any other person competent to contract with the permission of the court can go for the compounding of the offense. इसके साथ साथ if the compounding is done, what will be the effect of that? The effect is that it will be considered to be that the person is acquitted from the case. 2 judgments हैं. You people can write down in your concerned notebooks or Bear Act, that Unni Krishnan versus State of Kerala 2017 Supreme Court and State of Madhya Pradesh versus Lakshmi Narayan 2019 Supreme Court. Both the cases are related with the concept of
कंपाउंडिंग. ओके, कंपाउंडिंग से रिलेटेड है दोनों ऑफेंस, दोनों केसेस. चलिए, सो just give me few seconds. Yes. So after this, section number 321 that talks about the withdrawal of the prosecution. Withdrawal of the prosecution. What is important in this portion? That if the withdrawal of the prosecution is done, it will be done by an application by the public prosecutor or APP, and the consent of the court is must. Just mark it down. Consent of the court is must for allowing the withdrawal. It can be done at any time before the judgment is pronounced. 3 पॉइंटर हो गए, कौन करेगा, किसकी परमिशन से करेगा और कब करेगा. लेकिन what will be the impact of the withdrawal? So if the charges have been framed after that the withdrawal is done, then the things are different. If the charges are framed and before then that the withdrawal is done, then the effect will be different. So if it is done before the framing of charges, it will be considered to be that the accused is discharged. But if the charges are framed after that the withdrawal is done, then it will be considered to be acquittal of the person. तो अगर charges frame होने से पहले ही withdraw कर लिया तो discharge हो गया accused. Charges frame हो चुके तो उसके बाद withdraw हुआ तो माना जाता है कि एक्यूज का एक्विटल हुआ है. सो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है. यही से सवाल आता है बेसिकली. जो मेन क्वेश्चन है 323 टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेयर द केस इज आउट टू बी ट्राइड बाय द magistrate, where the case can be tried by the magistrate, but he is of the view that case is out to be tried by the court of sessions. तो वहां पे वो कमिटल कर देते हैं. 323 के अंदर मैजिस्ट्रेट केस चला सकते थे, लेकिन उनको लगता है कि कोर्ट ऑफ सेशंस कोर्ट केस चलाना चाहिए. He shall commit the case under 323 read with 209 of the CRPC. 325 talks about the concept of the submission proceeding. Submission proceeding चलेगी 325 के अंदर कि magistrate had tried the particular case, but he is of the view that some more punishment should be given to the concerned accused person, and he is not competent to that. He will be forwarding the accused and submit the case to the chief judicial magistrate, और chief judicial magistrate चाहे तो de novo ट्रायल, फ्रेश ट्रायल चलाना है, चला सकते हैं. जो भी पनिशमेंट देनी है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विल बी डूइंग दैट. ठीक है. 327 हेडिंग पूछा जाता है that under which provision it is mentioned that the court should be the open court. So it is section number 327 of the CRPC. Okay. इसके बाद आई विल बी रेफरिंग यू पीपल 2-3 सेक्शन जो आप एक बार सिर्फ ध्यान में रखना. नॉट दैट मच रेलिवेंट. वन इज सेक्शन नंबर 328 एंड वन इज 329. ठीक है. तो अनसाउंड पर्सन्स एंड इफ अ पर्सन इज हैविंग of a lunatic kind of a thing, so what will be the procedure of the court in such cases? So what happens, like court will forward such persons to the hospitals, mental hospitals, and thereby the report will be there, and after that the court is going to take up the proceedings. So इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, offbeat area है. It is only the offbeat area, but एक दो चीजें पहले पूछी गई तो इसलिए मैंने कहा कि दो सेक्शंस का आपको ध्यान रखना है, 328 and 329. Now you people just see come to section number 340. मैं जो मार्क करवा रहा हूँ इनका ध्यान रखना आप अब. ठीक है. 340 और 195 के आसपास जहाँ पे सेक्शन 195 है, just right beside that section number 340 will be telling you that what is the procedure for that. What kind of question comes from this particular section? That is, look, if just give me 1 second. Yeah. So if there is an offense which is being there against a public servant, or the offense is there in the court of law, like giving of false evidences, etc., then section 195 of CRPC states that okay, the complaint should be there by either by the public servant or in the other cases by the court. But the process of inquiry and trial, etc., is given in section number 340 of the CRPC, 340 of the CRPC, and it is saying that
the court will be taking up a preliminary inquiry in such matters, then record a finding to that, make a complaint thereof in writing, and then it will send it to the judicial magistrate of first class having the jurisdiction to try such offense. तो ये एक बेसिक सी चीज है. सवाल आता है कि 195 से कौन सा सेक्शन रिलेटेड है, तो सेक्शन नंबर 340 is telling you the procedure for that. इसके बाद आपके लिए the things which I will be mentioning उसको मार्क करके रखना, वहां से सवाल काफी बार पूछे जाते हैं. Section number 353, mark it down. 353 very very important with respect to exams. इसको पूरा ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पूरा पढ़ना है. That how the judgment is to be drafted, what the things can be there, क्या पूरी judgment पढ़ना जरूरी है और no, ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ है. By delivering the whole of the judgment or by reading out the whole of the judgment or by reading the operative part of the judgment pronounced किया जा सकता है. Now the next thing is that if the judgment is to be pronounced and the parties are not there in the court of law, then what should be the approach of court? And or if the accused is not in custody, then what should be the approach of court? Then it is mentioned that if the accused is not in custody, he shall be required to the court to attend and to hear the judgment, except where his personal attendance is dispensed and the sentence is only with fine. तो अगर सिर्फ फाइन वाली सजा है और उसकी पर्सनल अपीयरेंस आपने डिस्पेंस कर रखी है, तो उसको आने की जरूरत नहीं है. लेकिन बाकी केसेस में it is required to that the accused should be present in the court of law. If he is not appearing till then, the court is not going to pronounce the judgment. इसके साथ साथ you people mention 354, इसको मार्क करो, स्टार लगा लो, ठीक है. दैट द लैंग्वेज ऑफ द जजमेंट शेल बी व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, उसी में लिखा जाएगा. जजमेंट में आता क्या क्या है ये आप मार्क करो, ठीक है. पॉइंट्स और पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसीजन एंड रीजंस ऑफ द डिसीजन, ये एमसीक्यू बनता है. यहाँ से तीन चीजें मिले मतलब एमसीक्यू बनेगा, ठीक है. द जजमेंट शेल कंटेन पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसीजन देयर ऑन एंड रीजंस फॉर द डिसीजन. इसके बाद आपका the relevant area will be 357 capital A, that is victim compensation scheme. 357 capital A, victim compensation scheme, that every government in coordination with the central government will prepare the scheme for providing the funds for the purpose of compensation etc. for the person who has suffered losses, ठीक है. तो कोई भी अगर victim को compensation दिलवाना, it will be done in 357 capital A. What amount of compensation will be there? Who will recommend that? So district legal service authority or state legal service authority will decide that what should be the quantum of the compensation, ठीक है. quantum of compensation वहां से बताया जाता है, रिपोर्ट बनती है, उसके बाद आगे का काम चलता है, ठीक है. इसके साथ साथ ये पॉइंट है क्लॉज नंबर 5 के अंदर, यहाँ पे इस पॉइंट को आप मार्क कर लो. दैट जैसे रिकमेंडेशंस आ जाती हैं लीगल अथॉरिटी की तरफ से, आफ्टर ड्यू इंक्वायरी अवार्ड एडिक्वेट कंपनसेशन विद इन by completing the inquiry within 2 months. So 2 महीने के अंदर you have to complete the inquiry and then you will be ordering the compensation amount. 357B, ये if there is the offense of acid attack or gang rape etc., then whatever the fine is imposed over the accused, that fine is to be given as a compensation to the victim. उसकी बात है. इसमें बाद में कुछ एक सेक्शंस ऐड ऑन किए गए जो रेप से एसोसिएटेड सेक्शंस हैं, उसकी बात है. 357C ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम की बात कर रहा है. दैट ऑल द हॉस्पिटल्स आर ड्यूटी बाउंड टू गिव फ्री ट्रीटमेंट to the victims against whom the offenses of acid attack, rape or gang rape etc. is being committed. All the hospitals including the private hospitals, local bodies, सभी के लिए ये जिम्मेवारी डाली गई है, ठीक है. 358 में compensation for persons groundlessly arrested की बात है. That if there is no ground to arrest, still the person is arrested, that person can claim compensation against you, but the compensation will not be exceeding 1000 rupees. But ये है तो कम है, लेकिन आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है अंडर विच ग्राउंड प्रोविजन इट इज मेंशन्ड दैट कंपनसेशन टू द पर्संस ग्राउंडलेसली अरेस्टेड. तो इट इज देयर इन सेक्शन 358, ठीक है. बट अब इसमें हमारा थोड़ा ही काम बचा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मुझे आपको बताने हैं. पीपल जस्ट सी सेक्शन नंबर 362, इसको मार्क करो. एक बार अगर जजमेंट कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया, द कोर्ट कैन नॉट ऑल्टर द जजमेंट. कोर्ट बिकम्स functus officio. Functus officio means you have no legal authority to change your judgment. कोई आपके पास legal authority नहीं है अपनी judgment को बदलने की, unless and until you have changed it, any clerical or arithmetical error is there, तो वो कर सकते हो, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है.
तो 362 इज देयर जो फंक्शंस ऑफ इश्यू की बात करता है. 366 सबमिशन ऑफ द death to be sentence of death to be submitted by the court of session to the for confirmation to the high court. इसमें 368 भी आप लोगों ने कल मुझे बताया था कि 368 इज द राइट आंसर. सही आंसर आपने दिया भी था. बस एक चीज का ध्यान रखना कि कंफर्मेशन कम से कम 2 जजेस जो हैं उनसे होना चाहिए, मिनिमम 2. ठीक है, इट मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 2 जजेस. ठीक है. Now, with respect to appeals, some basic questions are there. Like 372 के proviso से सवाल पूछ लेते हैं that if the case is there and the victim want to file an appeal, can the victim go for that? The answer is yes, victim can go for that. Victim अपना वकील भी कर सकते हैं. That advocate is going to represent and he can give the assistance to the other counsels. तो वो चीज यहाँ पे लिखी गई है that no appeal shall lie from the judgment except it is provided by CRPC because appeal is your statutory right. Next one is provided that the victim shall have a right to prefer appeal against the order passed by the court acquitting the accused. तो अगर accused का acquittal हुआ है, state appeal में नहीं गया, तो फिर भी victim appeal में जा सकते हैं. ठीक है. 374 में इट इज अपील्स अगेंस्ट कन्विक्शन. तो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन अगर आपके हाई कोर्ट ने जजमेंट सुनाया है तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सेशन जज और एडीजे ने सुनाया तो हाई कोर्ट जाओगे. एंड इफ सम अदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट सेशन जज एटसेट्रा हैज डिसाइडेड अ केस, देन द अपील विल लाई टू द कोर्ट ऑफ सेशंस. इसका आपको ध्यान रखना है. 376 में नो अपील इन द पेटी केसेस, इसको आप एक बार जरूर पढ़ लेना. यहाँ से काफी बार ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम क्लॉज नंबर ए, बी एंड सी कि अगर कोई भी हाई कोर्ट ने अगर जजमेंट सुनाया है जिसमें व्यक्ति को इंप्रिजनमेंट 6 महीने से कम का है या फिर फाइन 1000 से कम का है या फिर दोनों, तो उसमें फिर अपील नहीं जा सकती. इफ द पनिशमेंट गिवन बाय द हाई कोर्ट इज लेस देन 6 months और फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000, अपील इज नॉट मेंटेनेबल. अगर कोर्ट ऑफ सेशन या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई है नॉट एक्सीडिंग 3 months एंड फाइन नॉट एक्सीडिंग 200, तो यहां से अपील नहीं जा सकती. अगर जेएम बंसी ने कोई केस सुना है जिसमें फाइन ही दिया है सिर्फ 100 रुपए का, तो उससे अपील नहीं जा सकती. इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट वन 378 दैट इज अपील इन द केस ऑफ एक्विटल. तो अगर एक्विटल हो गया तो आप अपील कर सकते हो, यू कैन गो फॉर दैट. इसमें एक चीज आप जो है उसका ध्यान रखेंगे, that is whenever there is an acquittal and you want to file an appeal, so either the district magistrate will be asking the public prosecutor, he will give the direction to the PP that okay you file an appeal, or the state government will direct the public prosecutor to file an appeal. तो सवाल आ जाता है that who will be giving the direction to the PP, it can be DM, it can be the state government. ठीक है. इसमें 380 मार्क करो आप लोग. ठीक है. जो सेक्शंस में मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे डिस्कस करने वाले नहीं, ओनली फॉर योर रीडिंग इटसेल्फ इट इज सफिशिएंट. सेक्शन नंबर 380 स्पेशल राइट ऑफ अपील. स्पेशल राइट ऑफ अपील क्या है? दैट इफ देयर आर मोर देन वन पर्सन हु आर कन्विक्टेड एट वन ट्रायल, एक ही ट्रायल चला, जॉइंट ट्रायल था, एक से ज्यादा लोग थे जिनको सजा हुई है, अपीलेबल केस सभी के पास नहीं है. लिखा है एन अपीलेबल जजमेंट और ऑर्डर हैज बीन पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन एंड ऑल और एनी ऑफ देम कन्विक्टेड शैल हैव द राइट टू अपील. ये स्पेशल राइट है. व्हाट इट मींस दैट A, B and C, 3 persons are there. All of these 3 are convicted, but the case of A is non-appealable, but the case of B and C is appealable. तो B और C अगर अपील लगा सकते हैं तो A के पास भी राइट आ जाता है अपील फाइल करने का. दैट इज व्हाट इज सेक्शन नंबर 380 टॉकिंग अबाउट. ठीक है. तो ये चीज है. इसके बाद आपका समरी डिसमिसल डायरेक्ट हेडिंग पूछते हैं. अंडर विच प्रोविजन समरी डिसमिसल ऑफ अपील कैन बी देयर. 384 इज देयर. इसमें फिर आपका 386 पावर्स ऑफ द एपिलेट कोर्ट को लेके सवाल आ जाता है कि अंडर विच प्रोविजन पावर्स ऑफ द एपिलेट कोर्ट इज देयर. 386 कैन द एपिलेट कोर्ट go for additional evidences etc. Yes, they can go for that. 389 में clause number 3 पूछा जाता है that if the person is being convicted, can the trial court which has convicted the accused person, can such court release the convicted person on bail after conviction? Answer is yes, provided if the person who is concerned is already on bail and he is sentenced to the imprisonment for a term not exceeding 3 years. तो अगर 3 साल से कम की सजा सुनाई है,
व्यक्ति ऑलरेडी बेल पे बाहर था तो ट्रायल कोर्ट उसको बेल पे रिलीज कर सकती है टिल द टाइम जब तक वो अपील फाइल नहीं करता है। दूसरा कि इफ द पर्सन वाज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस व्हिच इज बेलेबल एंड द पर्सन वाज ऑन बेल, तो इस केस में भी हम उसको बेल पे रिलीज कर सकते हैं। 3 केसेस व्हिच आर रेलेवेंट विद सेक्शन 389, दैट इज नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2007, नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2007, और एक ये 2020 में जजमेंट आया था प्रीतपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 2020, जिसमें कोर्ट ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, यू पीपल कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, दैट presumption of innocence is a fundamental postulate of the criminal jurisprudence and the courts may be liberal depending upon the facts of the case। तो जब जैसे आज एक कोर्ट के सामने केस चला, कोर्ट ने कन्विक्शन किया, कन्विक्शन जब किया तो 3 साल से कम की सजा उस व्यक्ति को सुनाई गई और वो व्यक्ति पहले से भी बेल पे बाहर था, तो अभी क्योंकि वो अपील करने का राइट उसके पास अवेलेबल है, तो टिल ही फाइल्स एन अपील एंड ही गेट्स अ बेल फ्रॉम द एपीलेट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट भी उसको जो है जिसने सजा सुनाई वो कोर्ट भी उसको बेल पे रिलीज कर सकता है। तो दैट इज व्हाट इज देयर इन सेक्शन नंबर 389 सबसेक्शन नंबर 3। इसके बाद एपीलेट कोर्ट क्या फर्दर एविडेंस टेकअप कर सकता है, 391 के अंदर है, बेसिक प्रोविजन है, ठीक है। यहाँ से सवाल बड़ा कम आता है लेकिन थोड़ा ध्यान आपको रखना है। 394 आप मार्क करो, इंपॉर्टेंट 394। लुक 394 स्टेट्स दैट कि अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील द एक्यूज्ड डाइज, तो क्या अपील अवेट हो जाएगा, क्या अपील अवेट हो जाएगा? द आंसर इज दैट लिखा है एवरी अदर अपील अंडर 377 और 378 शेल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ द एक्यूज्ड। लिखा है वैसे तो अपील अबेट हो जाती है, लेकिन इफ विद इन 30 डेज ऑफ द डेथ any near relative of that particular deceased file an application in the court that they want to continue with the appeal, then they can go for that. So 394 gives a special right that even if the accused is dead, his appeal is going to be abated, but if someone wants to come to the court and still contest an appeal on behalf of the deceased accused, he can come to the court, and the explanation is saying that near relative means parent, spouse, lineal descendant और brother और sisters। तो ये सब लोग जो हैं अपील जो फाइल हुई थी, एक्यूज की डेथ हो गई, अबेट हो चुकी है अपील, तो 30 दिनों के अंदर अंदर वो कोर्ट में आके कोर्ट को कह सकते हैं कि हमें अपील को आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। इसके बाद आपका ये बेसिक सेक्शंस हैं, रिवीजन कौन से सेक्शन के अंदर है, 399, 401 ये हाई कोर्ट की 401 के अंदर है, 399 की ये कोर्ट ऑफ सेशंस की है, 407 408 से ट्रांसफर ऑफ केसेस की बात कभी कभी पूछते हैं कि अंडर विच सेक्शन हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर द मैटर, इट इज 407, अंडर विच प्रोविजन सेशन कोर्ट कैन ट्रांसफर द केसेस, तो इट इज 408। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, डिटेल वाला एरिया वी हैव ऑलरेडी डन। अब डिटेल में कहां पे जाएंगे आप, वो मैं आपको बता देता हूं। एक आप सेक्शन नंबर 413 मार्क करो, 413, और आप मार्क करेंगे सेक्शन नंबर 416 कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको डेथ सेंटेंस सुनाई तो उसकी डेथ सेंटेंस को आपको कम्यूट करना पड़ता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। ये दो चीजें पूछी जाती हैं कभी कभी। इसके बाद 421 मैंने आपको बताया था, कभी भी जब फाइन किसी के ऊपर इंपोज हो या मेंटेनेंस वाले 125 के केसेस हैं, व्यक्ति फाइन पे नहीं किया या मेंटेनेंस का पैसा नहीं दे रहा, तो रिकवरी जो होती है वो 421 के हिसाब से चलती है। तो आप उसकी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अटैच करके उसको बेच सकते हैं और पैसा पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके लिए जो रेलेवेंट एरिया रहेगा उस पे आते हैं, that is bail, order number 30, sorry chapter number 33, ठीक है। अब hardly I will be taking 15 minutes more and this area is going to be concluded now। अब इसमें देखो बेल के केसेस में बेलेबल ऑफेंस अगर है 436 के अंदर पुलिस ऑफिसर कैन गिव द बेल और इवन द कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू रिलीज द पर्सन ऑन बेल। अगर एक व्यक्ति बेलेबल ऑफेंस है लेकिन फॉर अ वीक ही इज नॉट एबल टू फर्निश द बेल बॉन्ड एटसेट्रा, तो माना जाएगा कि दैट पर्सन इज एन इंडिजेंट पर्सन एंड ही विल बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। 436 कैपिटल ये कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अंडर ट्रायल प्रिजनर है, इफ अ पर्सन इज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर एंड ही हैज ऑलरेडी अंडरगॉन फॉर द 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कि कल को अगर इसको सजा होगी जो सजा होनी थी उसकी आधी तो ये पहले ही काट चुका है, सो 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज ऑलरेडी अंडरगॉन, दिस पर्सन विल बी रिलीज्ड ऑन बेल। लेकिन अगर डेथ सेंटेंस वाला केस होगा तो डेथ सेंटेंस का हाफ नहीं किया जा सकता, तो आपको ये 436 कैपिटल है उन केसेस में अप्लाई नहीं होता है। 437
प्राइमरली ऑन द पॉइंट ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, मजिस्ट्रेट के पास कॉम्पिटेंसी है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में वो कैसे बेल पे रिलीज कर सकते हैं। बस कौन से केसेस में नहीं कर सकते, दैट यू पीपल नो, दैट इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अगर ये पनिशमेंट है डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और मतलब अलग अलग नहीं, पनिशमेंट दोनों एक साथ में है, ऑल्टरनेटिव में है एक दोनों, ये दोनों है ना, तो उस केस में मजिस्ट्रेट रिलीज नहीं कर पाएंगे, ओनली द कोर्ट ऑफ सेशन इज हैविंग द पावर टू रिलीज द पर्सन ऑन बेल। और अगर किसी व्यक्ति ने प्रीवियस पास्ट में भी कभी ऑफेंसेस किए थे जिसमें उसका कन्विक्शन हुआ है, ऐसे ऑफेंस के लिए जिसकी सजा 10 साल सॉरी डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट या 7 ईयर्स तक थी, मिली कितनी दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर कानून के अंदर कितनी लिखी है वो इंपॉर्टेंट है। और 2 या 2 से ज्यादा बार अगर उस व्यक्ति को 3 से लेकर 7 साल के बीच के अपराध की सजा हो चुकी है, तो ऐसे केसेस में हम उसको बेल पे रिलीज नहीं कर पाएंगे, कोर्ट ऑफ सेशन ही रिलीज करेगा। इसके साथ साथ एक आप प्रोवाइजो नंबर जो इसका 2 है वो मार्क करो कि अगर एक व्यक्ति का अभी तक आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुआ है तो क्या ये ग्राउंड है बेल को रिफ्यूज करने का? द आंसर इज नो। इवन इफ द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन इज परेड इज नॉट येट कंडक्टेड, दिस इज नॉट अ ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग अ बेल टू अ पर्टिकुलर पर्सन। नहीं, आप इस ग्राउंड पे उसको बेल डिनाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ यू पीपल मार्क क्लॉज नंबर 6 एंड क्लॉज नंबर 7, ये 2 क्लॉजेज हैं, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। कि अगर मजिस्ट्रेट के पास केस चल रहा है और the trial is not concluded within 60 days period, 60 दिनों के अंदर अंदर अगर ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ तो फिर मजिस्ट्रेट उसको बेल पे रिलीज कर सकते हैं। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट इज ऑफ द व्यू दैट दिस पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी डिटेन, फिर उसको डिटेन करके हम रख देंगे। 2 केसेस इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो रिसेंट जजमेंट है आपका, आई होप यू पीपल हैव गॉन थ्रू विद दिस। एक तो मोहम्मद जुबैर वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2022, मोहम्मद जुबैर वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2022, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था दैट कोर्ट कैन इंपोज कंडीशंस इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। जब भी बेल देनी है तो कोर्ट कंडीशंस इंपोज करता है एक्यूज के ऊपर, और वो कैसी कंडीशंस हो सकती है? इट शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद 437 इटसेल्फ। दूसरा, कंडीशंस मे बी इंपोज जुडिशियसली टू एडवांस फेयर ट्रायल, ठीक है। जो भी आप कंडीशंस लगाओगे वो जुडिशियस कंडीशंस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दिया। नेक्स्ट एक केस में इंपॉर्टेंट केस अभी रिसेंटली चला था हमारे सामने, 2022 का केस है ये, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, जिसमें कोर्ट ने कहा है दैट बेल शुड बी ग्रांटेड इन एवरी केस व्हिच इज नॉट दैट मच सीरियस इन नेचर। 7 साल से कम वाले जो ऑफेंसेस है उसमें बेल जनरली मिल जाती है और आपको डिटेन भी, अरेस्ट भी नहीं करना होता, ठीक है। तो वो इस सत्येंद्र कुमार अंतिल में तो कोर्ट हैज गिवन द गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू अरेस्ट एंड बेल टू द concerned persons। 438 talks about कि कौन व्यक्ति anticipatory bail दे सकता है। You people know that High Court and the Court of Session is having the competency to grant the anticipatory bail. Anticipatory bail means what? That you have the anticipation that you can be arrested for a non-bailable offense. So you, on the basis of the anticipations, you go into the court. The court grants you bail. That is either the High Court or the Court of Session will be granting that. But conditions लगाई जा सकती हैं that you will not leave the country, or whenever the anticipatory bail is to be granted, the court will see that what kind of gravity of offense is there done by the offender। और इसमें एक important चीज है that once the ex parte relief is given in the anticipatory bail, only for a time being, the court will be issuing notice to the public prosecutor. 7 days period will be minimum given, and then the court will be conducting the bi-parte proceedings, and then only the court is going to give the order on the anticipatory bail application। Very very important judgments on anticipatory bail, landmark judgments, Gurbaksh Singh CBA versus State of Punjab 1980 Supreme Court, and it was reiterated in 2020 by Sushila Agarwal versus State of NCT of Delhi। I hope you people have gone through with these judgments at the time when you were having the conceptual classes of CRPC। Please tell me yes or no। किया है ना ये सारी जजमेंट्स जितनी हमने? कुछ नहीं होंगी मेरे ख्याल से। आई होप यू पीपल आर गेटिंग सम न्यू जजमेंट्स आल्सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन फ्रॉम मी। जो 2023 की हम जजमेंट्स की बात कर रहे हैं, जजमेंट्स ऑफ 2022 2023। यस एवरीवन। चलिए, आप लोग तो मेरे ख्याल से लंच कर चुके होंगे क्लास के साथ साथ। यस एवरीवन। चलिए, सो कमिंग टू द लास्ट 5 to 8 minutes discussion now। मेधा सिंह गुरबख्शिंग, मेधा गुरबख्शिंग तो पुराना हो गया बच्चे। प्लीज ऐड दिस सुशीला अग्रवाल ऑल्सो
सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2020, ठीक है, तो उसी से होगा, ठीक है। पूजा सिंह से टाइम हो गया, सीआरपीसी पढ़ेगा नहीं, टाइम तो लुक अपडेट रहना पड़ेगा बिकॉज एग्जाम्स आर नाउ वेरी ट्रिकी, बहुत सारे रिसेंट अपडेट्स पूछे जा रहे हैं, तो यू शुड बी वेरी मच वर्स विद दैट, उसके साथ ही काम करना है। चलिए 439, दैट इज पावर ऑफ अ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन टू ग्रांट बेल टू द पर्सन। अगर कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आपको लगता है कि मजिस्ट्रेट की पावर नहीं है, देन द नेक्स्ट पावर विल बी ऑफ द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन। दोनों के पास कॉन्करेंट जुरिसडिक्शंस होती हैं, लेकिन इफ द कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी इम्पोज्ड, देन 437 क्लॉज नंबर 3 ही फॉलो किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द इम्पोजिंग ऑफ द कंडीशंस at the time when the bail is to be granted। कोई भी बेल अगर हमने यहाँ पे दिया है, if you find that okay this bill is required to be cancelled, तो कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के पास पूरी पावर है ऐसी बेल्स को कैंसिल करने की। और दो चीजें मैं आपको और बता देता हूँ, जो कि सत्येंद्र कुमार अंतिल की जजमेंट मैंने अभी आपको बताई, उसमें से आपको मिलता है, ये एग्जाम में सवाल आ सकता है, इसको ध्यान से आप रखो, that if it is a regular bail एप्लीकेशन, अगर रेगुलर बेल एप्लीकेशन है इन सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई, द कोर्ट हैज स्टेटेड दैट इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 2 वीक्स। और अगर कोई भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है, इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 वीक्स। इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है तो 6 हफ्ते के अंदर डिस्पोज करनी ही करनी है, और रेगुलर बेल एप्लीकेशन है तो 2 हफ्ते के अंदर डिस्पोज करनी ही करनी है, ठीक है जी। ये सत्येंद्र कुमार अंतिल की जजमेंट से ये पॉइंट आपको मिलेगा। इसके बाद आप आ जाओ, बॉन्ड से तो कोई बहुत ज्यादा सवाल वैसे बनते नहीं है, आप सेक्शन नंबर 440 जरूर एक बार मार्क कर लेना। कोई भी बॉन्ड अगर एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन कोर्ट ने कहा था कुछ ज्यादा अमाउंट का बॉन्ड भरने को कह दिया कि 5 करोड़ का बॉन्ड भरो, तो कोर्ट ऑफ सेशंस जो है वो उसको कम कर सकती है या हाई कोर्ट कम कर सकती है। और बॉन्ड का अमाउंट कभी भी एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, मतलब लिमिट कोई नहीं है, इट कैन नॉट बी से दैट इट इज लिमिटेड बट इट शुड नॉट बी एक्सेसिव। तो वो व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितने का बॉन्ड जो है हमें भरवाना है, ठीक है। बाकी इसमें बॉन्ड से रिलेटेड बाकी जो एरिया है दैट इज नॉट दैट मच रेलेवेंट with respect to the multiple choice questions, but PYQ से एक बार आप जरूर फिगर आउट कर लेंगे कि उसमें अगर कुछ आया तो उसको एक बार ध्यान में रख लेंगे। 460 talks about irregularities which do not vitiate the proceeding। बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रायल चलाते समय आपसे कुछ कमियां रह जाती हैं, इरेगुलरिटीज हो जाती हैं, लेकिन उन इरेगुलरिटीज का कोई प्रभाव आपके केस में नहीं पड़ता। तो 460 टॉक्स अबाउट दैट इरेगुलरिटीज व्हिच डू नॉट विशिएट द प्रोसीडिंग। तो सेक्शन 94 के अंदर सर्च वारंट इशू करने में इरेगुलरिटी है, 155 के अंदर कोई इरेगुलरिटी कर दी, इंक्वेस्ट कंडक्ट करने में कोई इरेगुलरिटी आपने करी है, 187 के अंदर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को लेके कोई इरेगुलरिटी रह गई, पार्डन ग्रांट करने में कोई इरेगुलरिटी रह गई, तो ऐसी सिचुएशंस में इरेगुलरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केस विल नॉट बी विशिएटेड। लेकिन 461 कहता है कि किन इरेगुलरिटीज से केस विशिएट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो इरेगुलरिटीज हैं इनसे आपकी प्रोसीडिंग्स विशिएट हो सकती हैं। जैसे कि आपने व्यक्ति से गुड बिहेवियर का सिक्योरिटी डिमांड किया जिससे आपको नहीं करना चाहिए था, या फिर डिमांडिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, अननेसेसरली आप डिमांड कर रहे हो, दीज थिंग्स कैन विशिएट द प्रोसीडिंग्स। यू आर आस्किंग एन ऑर्डर फॉर द मेंटेनेंस, अननेसेसरली यू आर पुटिंग अप द मेंटेनेंस ऑर्डर, दीज थिंग्स कैन विशिएट द प्रोसीडिंग्स। ये लिस्ट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पिछली बार 2019 में डीजीएस में यहाँ से सवाल आया है, तो इसको आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शन फॉर दैट, ठीक है। इसके साथ साथ 463 ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स जब कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए है कि जब भी 164 के अंदर कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट ट्रायल स्टेज के अंदर दिया जाएगा। दैट डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ वंस द डॉक्यूमेंट इज गिवन एज पर सेक्शन 91 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ओरल एविडेंसेस विल नॉट बी अलाउड, but if there is non-compliance of section 164 or 281, that the magistrate can come to the court and he can give the statement with that effect. So 164, 281 and 463 of CPC तीनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आप लोगों ने लगा रखी हैं, जस्ट टेक आउट योर कॉपी, सी वेयर 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज कोरिलेटेड विद दीज प्रोविजंस, ठीक है। इसके साथ साथ अब आपका 464 मैंने बताया आपको 215 के साथ चलता है।
465 जर्नल प्रोविजन है, कोई भी इरेगुलरिटी एटसेट्रा अगर है जिससे कोई इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस डिफीट नहीं हो रहा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट सेक्शन, सेकंड लास्ट सेक्शन फॉर योर रेफरेंस, दैट इज 468। ये थोड़ा सा अब डबल स्टार लगा दो क्योंकि यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिमिटेशन पीरियड है दैट एट व्हाट टाइम द कोर्ट शुड बी टेकिंग द कॉग्निजेंस। ठीक है, कोर्ट कॉग्निजेंस किस समय में ले और पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है। तो अगर कोई भी ऑफेंस जिसकी सजा सिर्फ फाइन है, एनी ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन, वो केस कोर्ट के सामने 6 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। 6 months इज द टाइम लिमिट फॉर टेकिंग द कॉग्निजेंस। कोई भी ऑफेंस जिसकी सजा 1 साल तक मैक्सिमम है, नॉट एक्सीडिंग 1 year, तो कोर्ट के सामने वो केस विद इन 1 year आ जाना चाहिए। इफ एनी ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट इज एक्सीडिंग 1 year बट नॉट एक्सीडिंग 3 year, फॉर दैट द maximum time period is given, that is 3 years period for the court to take up the cognizance। 3 साल के अंदर अगर मैटर कोर्ट में नहीं आया तो उसके बाद कोर्ट मना कर सकता है। समझ गए? तो फाइन से रिलेटेड अगर ऑफेंस था तो मैक्सिमम पीरियड है 6 months का। अगर अप टू 1 year पनिशमेंट वाला ऑफेंस है तो कोर्ट कॉग्निजेंस कितने समय के अंदर कोर्ट को ले लेना चाहिए? विद इन 1 year। आफ्टर 1 year इट विल बी टाइम बार्ड। If the punishment is 1 to 3 year, then the maximum time period for taking the cognizance is 3 year. And if the offense is punishable with more than 3 year, then there is no limitation, there is no time bar limitation for that। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। 468 बहुत बार पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक चीज है कि ये आपका टाइम पीरियड जो 6 महीने का, 1 साल का या 3 साल का हम देख रहे हैं, ये शुरू कब से होगा? दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, तो डेट ऑफ ऑफेंस से ये शुरू होता है। और लास्ट सेक्शन आप लोगों के लिए रहेगा, दैट इज सेक्शन नंबर 480। एक तो 479 मार्क कर लो। 479 यहां से पूछ लेते कि अगर किसी केस में जज या मजिस्ट्रेट खुद भी इंटरेस्टेड है तो क्या वो उस केस में जजमेंट दे सकते हैं? द आंसर इज नो। फिर वो बायस्ड हो जाएंगे तो वो जजमेंट नहीं दे सकते। 479 आप मार्क करेंगे। और किसी भी कोर्ट में अगर किसी व्यक्ति ने प्रैक्टिस कर रखी है तो वो उसी कोर्ट में मजिस्ट्रेट बन के नहीं बैठ सकता। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 482 हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स की बात कर रही है। लास्ट सेक्शन फॉर द क्लास टुडे। ठीक है, इतना लंबा सेशन हम लोगों ने ले लिया, 3 hour सेशन है ना। 482 सीआरपीसी प्रोवाइड्स विद रिस्पेक्ट टू द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। inherent powers of the high court, nothing in the CRPC will deem to affect the inherent powers of the high court। ये हमारी क्योंकि क्रिमिनल केसेस हैं तो क्रिमिनल केसेस में इनहेरेंट पावर केवल और केवल हाई कोर्ट के पास है। लोअर कोर्ट्स के पास इनहेरेंट पावर नहीं होती है, एंशिलरी पावर्स होती हैं। इनहेरेंट पावर के अंदर कोर्ट क्या करेगा? It can pass any order in the interest of justice or to prevent the abuse of the process। केसेस नरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है इनहेरेंट पावर्स को लेके। कप्तान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 2021 का केस है। और सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कोर्ट ने पास किया था अभी रिसेंटली 2022 में, दैट इज टेक्सा बैन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि लोग जैसे आपने अभी 320 पढ़ा, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं तो ऑफेंसेस की कंपाउंडिंग 320 के अंदर हो जाती है। लेकिन अगर कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है तो क्या हाई कोर्ट उसमें कंपाउंडिंग कर सकता है? द आंसर इज नो। वैसे तो नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर देता है और क्वैशिंग होने से अपने आप प्रोसीडिंग खत्म हो जाती है। तो 482 कैन बी एक्सरसाइज्ड टू क्वैश द प्रोसीडिंग्स इन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, बट in heinous crimes quashing should not be done as it will impact the society। तो बहुत ही अगर कोई सीरियस ऑफेंस है उसमें आप क्वैशिंग भी मत करें। तो ये डेक्साबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में कोर्ट ने बताया था। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन थ्रू आउट द CRPC till section number 482। I hope you people are very clear on the basic fundamentals which are important with respect to your multiple choice questions। So we are done with the session। Thank you so much। And I believe that now CRPC अगर आपने पहले काफी टाइम से नहीं पढ़ा है तो ये क्विक रिवीजन से आपको वो समझ में आ गया होगा कि सारी चीजें दिमाग में है और क्या क्या पढ़ना है और किस चीज के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। So that is all for today। Thank you so much to all। I hope you got the things, है ना। मैंने सोचा था कि आज ये खत्म नहीं होगा, but we tried to did it। चलिए, thank you so much। Now we will be taking up some other marathon class on some other subject। Thank you so much till then। Bye bye, take care।